we'll start with a very interesting question. Okay, what is DC and what is AC? Okay, there are two types of supply. So we'll talk about supply. One is AC supply and another is DC supply. Okay, can anyone tell me definition of AC supply? Can anyone tell me definition of AC supply? A voltage, a supply that will change with respect to time. A voltage, current, a quantity that will change with respect to time. Okay, बाय चांस कोई इसका डेफिनेशन बताएगा कि अगर AC is changing with respect to time, what is DC? What is DC? Constant with respect to time. But let me wait. Sometimes these definitions are not sufficient. Sometimes these definitions are not sufficient. हम लोग इसको प्रूव करेंगे with an example. No doubt, any quantity that changes with respect to time, is AC, and any quantity that remains constant with respect to time, is DC. तो बच्चों, मैं एक सप्लाई ड्रॉ करता हूं, मुझे बताना is it AC or DC? Is it AC or DC? बच्चों प्लीज स्टॉक अ लिटिल बिट, थोड़ा सा चैट में आ जाओ, बिकॉज आप लोग इंटरेक्ट करोगे तो आपको मजा आने वाला है. इज इट AC और DC? AC. ओके, वेरी गुड. तो बच्चों यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा V, VM, माइनस VM. इंस्टेड ऑफ वोल्टेज देयर विल बी करंट. ओके, वन मोर थिंग, देयर इज सम फियर इन योर माइंड कि सर हमने 10th, 11th एंड 12th में फिजिक्स में जो टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा था, तो इसके लिए ये सब्जेक्ट हमको डिफिकल्ट जाएगा, ऐसा कुछ लोगों ने अपने मन में बना के रखा होता है. रिमूव ऑल दोस पर्टिकुलर मिथ्स. आई एम देयर टू मेक यू, हेल्प यू, to take you up to the far end of this subject. I'll be there till you give me your feedback at Vidyalankar कि सर हमारा एंड सेमेस्टर एग्जाम भी अच्छा हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो ओरल एग्जामिनेशन है BEE का, I was very confident and I was able to answer all the questions and I was able to give some practical examples. Okay, तो बच्चों, I'm going to draw one more supply. तो मुझे बताना कि suppose this is a 5 volt supply plus, is it AC or DC? DC. It is a DC. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? It is changing with respect to time. यहाँ पे क्या दिख रहा है? It is remaining constant with respect to time. How many of you agree कि this can be a sufficient definition for DC? Raise your hand. कि सर इतना definition मैंने एग्जामिनर को बता दिया, तो एग्जामिनर will give me full marks. कि AC means alternating voltage and DC means a constant voltage. इतना ही दो स्टेटमेंट आप ओरल में बोलते हो. ओके, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तनिषा, वेरी गुड, थैंक यू. एटलीस्ट मुझे बताओ कितने लोग एग्री करते हैं कि मैंने अगर टीचर को बताया कि AC is a alternating voltage, a voltage that is changing with respect to time, and DC is a constant voltage, and with this definition examiner will be happy. He will say it is 10 out of 10, और इसको कुछ और चाहिए. चलो देखते हैं. बच्चों, एक और सप्लाई में ड्रॉ करता हूं. I will draw one more supply. ध्यान से देखना, it is something very interesting. Okay, this is 0. This may be 4 volt or 3 volt like this. और बच्चों, जैसा मैंने बोला था कि do participate in every question I'm asking. आपको बहुत मजा आने वाला है. I'll take some quizzes also afterwards. I'll make you very involved in this subject. तो मुझे बताओ कि is it AC or DC? DC. चलो, और everyone, I want all 30 answers. Even Subodh sir also should vote कि वो भी बताना चाहिए कि it is AC or DC. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा ना बच्चों?
सब लोग बोलेंगे, एटलीस्ट पुट इट इन चैट बॉक्स, इज इट एसी और डीसी? DC. डीसी. आर्यन इज सेइंग डीसी, एंजेला इज सेइंग डीसी. ओके, अरे बच्चों 30 आंसर चाहिए मुझे. चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी. आपको लिखना है एसी और डीसी. ओके, सो एवरीवन इज सेइंग डीसी डीसी डीसी, बट इज इट वायलेटिंग आवर बेसिक डेफिनेशन? हमने तो डेफिनेशन में बताया था कि डीसी इज अ कांस्टेंट एंड एसी इज अल्टरनेटिंग. तो थोड़ा कोई बता सकता है हाउ कैन दिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अ डीसी वोल्टेज? Combo of AC and DC. Good. Now that answer was I was looking for. This is pure DC, bachcho. This is pure DC, and this is impure DC or pulsating DC. और देखो मैं क्या लिख रहा हूं, DC plus AC which is unwanted. DC plus AC unwanted. अब बाय चांस किसी को मालूम है this voltage is the output of which electronic circuit? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, फिल्टर, एम्पलीफायर और रेक्टिफायर. Rectifier. वेरी गुड. सो दिस इज आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर. ओके, वापिस ऑप्शन, दो ऑप्शन. इज इट आउटपुट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर और इज इट आउटपुट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर? Half wave. चलो बच्चों, गलत हुआ चलेगा. ओके, नाउ हाफ वेव में क्या होगा मैं दिखाता हूं, देखो कितना इंटरेस्टिंग है. हाफ वेव में ऐसा होगा बच्चों, नो वोल्टेज. दिस इज हाफ वेव, मतलब 0 to pi voltage will be there, pi to 2 pi voltage will not be there, and this is full wave. Okay, so this type of great interaction is going to happen with us. तो बच्चों, अब कोई बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डीसी? एक मुझे एक बेटर डेफिनेशन बनाना है एसी और डीसी का. तो मैं ऐसा डेफिनेशन मतलब बताता हूं कि एसी हैज गॉट बोथ पोलैरिटीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. मतलब it will go in positive cycle also, it will go also in negative half cycle. And what is DC? Okay, is it a now more correct definition? Is it a better definition now? तो बच्चों अगर आप चैट जीपीटी करते हो, ओके, विच एआई टूल यू लाइक मोस्ट? चलो यूर, अभी ये चॉइस तो मुझे 30 लोगों से पता चाहिए. परप्लेसिटी, क्लाउड, गुड. और बच्चों आपको अभी सब एआई टूल्स मालूम चाहिए. वेरी गुड वेरी गुड. देखो ग्रॉक, देखो ये आपका ये बहुत interesting area. So Grok is also very good. Okay. Okay. Anyone know any AI tool which integrate 10 AI? जो 10 AI की ताकत आपको देगा. 10 आपने सुना होगा 10 नींबू की शक्ति, 100 नींबू की शक्ति एक नींब बार में. ऐसा कोई AI है क्या? नहीं नहीं, अभी भी नहीं, अभी नहीं. मैं थोड़ा सा देता हूं. दैट पर्सन स्टेज इन जर्मन, जिसने ये सब बनाया, जिसने 10 AI को एक में इंटीग्रेट किया है. नाउ आंसर शुड कम, लॉट ऑफ आंसर शुड कम. एनीवन नो ऐसा कोई AI? ओके, मैं और एक हिंट देता हूं. यू कैन गूगल इफ यू वांट बेटा. ओके, और कोई ऐसा पर्सन है जो यहाँ पे नहीं रहता बट ही हैज गॉट लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन वी पीपल? ओके, डू यू नो फिएस्टा? ध्रुव राठी, वेरी गुड. डू यू नो एनी एआई एक्चुअली ही हैज इंटीग्रेटेड? ओके, ही हैज इंटीग्रेटेड वन वेरी इंटरेस्टिंग एआई. I will not talk about कि वो अच्छा है बुरा है. Fiesta, very good. Actually, it is a combination of 5, 7, 8, 10 AIs, and actually different AIs का आपको ऑप्शन मिलेगा. मतलब आप लोग चूज कर सकते हो कि which option is better, and see how much she is earning just by having a good discipline, a good learning. Okay. Now, Ayan, thank you very much, बच्चा. तो बच्चों, hope till now you are with me. It is 8:31. ओके, तो बच्चों डेफिनेशन क्या बन गया एसी का? चलो एक लाइन में बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसी, जो एग्जामिनर को इंप्रेस करेगा. एसी और डीसी का डेफिनेशन आप क्या बताओगे? आप बोलोगे सर एसी इज द सप्लाई which has got both polarity, positive and negative. It becomes positive as well as which becomes negative also.
but DC has got only single polarity, either plus or either minus, and a pure DC is a constant. A pure DC is a constant. चलो, now next thing. तो hope I'm clear. Anyone any doubt? कुछ भी पूछना है पूछो बच्चों, बिकॉज ये हमारा ब्रेड एंड बटर होने वाला है BEE में. तो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स. चलो, कैन आई गो अहेड? मैं बीच बीच में आपको थोड़ा सा पूछूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ डाउट्स आपको होने चाहिए. ओके, मैं इसलिए कुछ कभी कभी पूछूंगा कि दैट डाउट देन आई विल आस्क ऑन योर बिहाफ. वो डाउट मैं आपको पूछूंगा. डाउट शुड बी, सर हम घर पे कौन सा सप्लाई यूज करते हैं, एसी करते हैं डीसी करते हैं? एक्चुअली दैट शुड बी डाउट एज अ स्टूडेंट फ्रॉम मी, बिकॉज आई एम गोइंग टू पे अ गुड अमाउंट ऑफ फीस टू कॉलेज एंड टू क्लासेस. तो आपको बहुत सारे डाउट्स पूछने चाहिए बच्चों. इज इट अ वैलिड डाउट? मोमेंट यू लर्न व्हाट इज एसी, व्हाट इज डीसी, फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड, अरे सर आपने तो पढ़ा एसी डीसी, हमारे घर पे क्या यूज होता है? कोई बताएगा घर पे क्या यूज होता है, एसी और डीसी? घर पे एसी होता है. गुड गुड गुड. बट देन ये जो आपका BLDC फैन कैसा काम करेगा? देखो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है. Okay, Tanisha is saying AC. Your answer is absolutely correct. We use AC at home. We use AC at home. Now my question to you, कि आपका BLDC फैन कैसा काम करेगा? कोई बताएगा व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ BLDC? व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ BLDC? It is a brushless DC motor. So what is the greatest difference between normal conventional fan and BLDC? कि आपका जो BLDC फैन है, ये जो एटम वर्क यूज कर रहा है, ओके, मीर विद्यालंकार नोट्स, विद्यालंकार EQ, विद्यालंकार GQ, प्रोफेसर जावेद पटेल, एंड देन आई विल सजेस्ट सम बुक्स. ओके, नाउ मीर हैज आस्क्ड वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि सर कौन से बुक्स रेफर कर सकते हैं. तो एट विद्यालंकार वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू डिटेल नोट्स. एग्जाम क्वेश्चन के लिए EQ, ग्रेडेड क्वेश्चन के लिए GQ, EQ solution. But still, I will tell you one Bible of this particular subject. Okay, can you read this name? What is the name? चलो पढ़ के बताओ. B.L. Thereja. Now, not necessary to buy this book. जब भी कॉलेज में जाओगे, गर्लफ्रेंड के साथ घूमते घूमते कभी कभी लाइब्रेरी में भी जाना. ओके, तो होप most of the time you will be in library, unless you will be in the canteen and in the outskirts of your college campus. So बच्चों, library is a very interesting thing. Do read physical books. It gives some very interesting interaction. At Vidyalankar we are going to provide the entire notes. So notes specially it will help you to learn the subject. Then exam question के लिए EQ रहेगा, graded questions रहेंगे GQ, and EQ solution भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे. प्लस आई विल आल्सो गाइड फॉर यू कि कौन कौन सी बुक्स आप लोग यूज कर सकते हो. नीड हैव आई क्लियर्ड योर डाउट बच्चा? ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि ये BLDC को कैसे सप्लाई जाएगा, बिकॉज उसमें तो फैन में तो DC मोटर होता है. तो देयर इज सम मैनेजमेंट डन. आपका जो AC है दैट कैन बी कन्वर्टेड टू DC. चलो, गुड जॉब. बच्चों, एक क्वेश्चन आपको पूछना था. I want to ask one question to you कि आपके घर में क्या क्या अप्लायंसेस है? एवरीवन विल टेल मी. हर एक जन कोशिश करो एक क्या क्या आप इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या क्या ऑपरेट करते हो. ओके, आई विल स्टार्ट. फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन. गुड. शेयर्स इज सेइंग टेलीविजन, ग्राइंडर. ओके, एयर फ्रायर. गुड गुड गुड. ओके, तो ये सब आपको मालूम चाहिए. पीसी आप यूज करते हो. गुड गुड गुड, वेरी गुड. तो आप लोग ट्यूबलाइट यूज करते हो, आप पीसी यूज करते हो, आप एयर फ्रायर यूज करते हो. ओके, आपके घर में हीटर रहेगा, आपके घर में वॉशिंग मशीन रहेगा, वाईफाई राउटर रहेगा. तो मेनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, एंड जितने एप्लीकेशंस उतना ज्यादा पढ़ने का मौका. देखिए, मोटर है, हर एक में कैपेसिटर है, इंडक्टर है, इतना सारा हम लोग पढ़ेंगे. एम आई राइट? तो हम लोग सब इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं आपके घर के बारे में, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में. देन
how to reduce your electricity bill legally, yeah, because there are some illegal way, and we all people are ethical people, हम लोग ऐसे में नहीं पढ़ेंगे, but we are going to learn कि हमारा electricity bill हम कैसा पढ़ेंगे. Okay, do you know this smart meter? If you use your electricity wisely between the solar hours, you can reduce your electricity bill. किसी को ये फीचर मालूम है स्मार्ट मीटर का? अगर आप आपका इलेक्ट्रिसिटी वाइजली यूज करते हो, तो गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस कि आप अगर सोलर आवर में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो तो वहां पे आपको सब्सिडी मिलेगा. सो दिस टाइप ऑफ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आर देयर कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग चार्ज, विच पावर एक्चुअली दे रिकॉर्ड. तो इस तरह की कुछ चीजें हम लोग पढ़ेंगे. चलो, गुड इंडक्शन. नाउ बच्चों, सबसे ज्यादा डर किसका लगता है आपको घर पे? कौन से लोड का डर लगता है? नहाते वक्त आप क्या ऑन करते हो? व्हाट यू टर्न ऑन ड्यूरिंग वाटर हीटर? अब बच्चों हमेशा ध्यान रखना, वाटर हीटर एंड टोस्टर, गीजर, इससे हमेशा बच के रहना, बिकॉज ये बहुत हेवी लोड रहता है, एक बड़ा सा इंडक्टर होता है, और प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगा तो इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ डैमेज. एंड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये लेता है, बिकॉज इसका रेटिंग वॉट्स में नहीं होता, इसका रेटिंग होता है किलोवाट में, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट. तो प्लीज इंश्योर कि दिस इज इन प्रॉपर कंडीशन, दिस इज इन प्रॉपर कंडीशन. बच्चों, कोई ऐसा प्रोडक्ट मालूम है आपको नाउ डेज अमेजोन पे अवेलेबल है? अगर वो प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो आप खुद पता कर सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आ सकता है. 700-800 रुपए का प्रोडक्ट है, आप उसको प्लग इन करके हर एक आपका लोड टेस्ट कर सकते हो, और वो वाईफाई एनेबल्ड है, स्मार्ट है, आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपको बताएगा कि आपका रेफ्रिजरेटर, आपका वॉशिंग मशीन, आपका गीजर अच्छे कंडीशन में है या नहीं है. तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं. चलो, नाउ आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग टू यू, कि आपके घर पे एसी है, तो इज इट, पूर्वी, थैंक यू बच्चा, इज इट सिंगल फेज और इज इट थ्री फेज? तो बच्चों मैंने एसी में दो टाइप किए, एसी में मैंने दो टाइप किए, वन इज सिंगल फेज एंड अनदर इज थ्री फेज. अब बच्चों बोलेंगे ये क्या होता है सिंगल फेज और थ्री फेज? ओके, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बोलता हूं. ऑल ऑफ यू आर हैविंग दिस सॉकेट नियर बाय टू यू. आपके आजू बाजू में ऐसा कोई सॉकेट है? ओके, मैं नंबर देता हूं. कितने लोगों के नजदीक सॉकेट नंबर 1 है? कितने लोग के नजदीक? रेज योर हैंड बच्चों. इज दिस सॉकेट नियर बाय टू यू? ओके, राइट नाउ योर लैपटॉप, योर चार्जर, इज इट प्लग इन टू यू? ओके, कितने लोग के नजदीक, कितने लोग के नजदीक सॉकेट नंबर 2 है? गुड जॉब, गुड जॉब, शेयर्स शेयर्स. ओके, तो बच्चों देखो कितना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है आज का लेक्चर. तो सॉकेट 1, सॉकेट 2, ये क्या होता है? सॉकेट 1 में कितने आपको प्लग्स दिख रहे हैं, कितने होल्स दिख रहे हैं? आर दे 5 और 4? आर दे 5 और 4? 5 है, और नीचे वाले में 2 है, तो दोनों टाइप के सॉकेट्स आप में रहेंगे. तो आप बताओ अभी, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि आपके घर पे सिंगल फेज सप्लाई है या थ्री फेज सप्लाई है? कितने कितने होल्स है? 3 होल है, 5 होल है, तो इज इट थ्री फेज सप्लाई और 5 फेज सप्लाई? चलो ये गेस करते हैं, देखते हैं कि आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग कितना है. मैं आपको बाद में हेल्प भी करूंगा कि हाउ टू लर्न द प्रॉब्लम स्टेटमेंट अराउंड यू. चलो, कोई बताएगा? थोड़ा गेस करो, चलेगा. गेस करने में तो हम बहुत होते हैं ना. 11th 12th में क्या किया हमने? जेडब्ल्यू में, एडवांस जेई में, तो बहुत सारा गेस भी किया है ना. ऑप्शन नंबर बी 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 बी, ऑप्शन नंबर डी 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 डी, ऐसे किया है किसी ने? ऐसा कोई टेक्निक ढूंढा था कि अगर कोई टॉपिक नहीं आता तो थोड़ा सा ऐसा टेक्निक, सब डी करते हैं, सब बी करते हैं. चलो, कोई बताएगा? तो समोनी पूर्वी सेइंग थ्री फेज. चलो बच्चों, अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज. नाउ व्हाट इज सिंगल फेज? हाँ, सिंगल फेज is a 230 volt 50 hertz supply, and three phase is a 400 volt 50 hertz supply. Okay, but wait a minute. बहुत सारे लोग यूएस में जाएंगे टू डू देयर मास्टर्स, टू वर्क विथ गूगल, मेटा, यूट्यूब. कितने लोग का ड्रीम है टू गो टू गूगल, टू गो टू यूट्यूब, टू गो टू फेसबुक, एनवीडिया, स्पेसएक्स? कितने लोग का ड्रीम है? प्लीज रेज योर हैंड, यू ड्रीम बिग.
तनिषा, गुड। बच्चों बहुत बड़ा ड्रीम होना चाहिए बच्चों, स्मॉल ड्रीम इज अ क्राइम। ओके, तो हैव दिस ड्रीम, और इवन हैव अ ड्रीम ऑफ हैविंग अ कंपनी, गोइंग टू हार्वर्ड, गोइंग टू एमआईटी, दिस शुड बी अ ड्रीम। और बच्चों वहां पे इस रॉट टीचिंग को नहीं एक्सेप्ट किया जाता, यू हैव टू बी इनोवेटिव, और इनोवेटिव होने के लिए सबसे पहला मौका मैं आपको दूंगा, डू पार्टिसिपेट इन टुडेस लेक्चर। तो बच्चों मोमेंट यू एंटर इन यूएस, क्या चेंज होने वाला है? किसी को एक गलती से मालूम है क्या? एनीवन नो कि व्हाट चेंज विल हैपन इन यूएस? और बच्चों जैसे मैंने बोला, दोज हु रेज्ड योर हैंड, और जिन्होंने रेज नहीं किया, दे आल्सो वांट टू हैव दिस टाइप ऑफ ड्रीम जॉब इन देयर लाइफ। और बच्चों वहां पे रिमेंबर पार्ट को, देर इज अ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, उसमें रिमेंबर को कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले हैं, दे आर गोइंग टू अप्लाई, क्रिएट, इस चीजों को आपको सीखना है, एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। क्या बच्चों, क्या फर्क है? नाउ आर दे वर्किंग ऑन द लेसर वोल्टेज? व्हाट वोल्टेज दे आर वर्किंग? 110 वोल्ट। ओके, अब कोई थोड़ा सा लॉजिक यूज करके बताएगा, व्हाई इन इंडिया वी आर यूजिंग दिस? हम एक ही यूज करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग दिस? सर वेदर और कंडीशंस के हिसाब से। गुड। चलो मैं एक नाम लिखता हूं यहाँ पे। कोई बताएगा अपने जो स्टैंडर्ड्स आए ये कहां से आए? हु रूल्ड इंडिया बिफोर 1947? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स। तो आर वी फॉलोइंग all the standards given by Britishers? तो दैट इज द बेसिक आंसर दैट यू शुड हैव, नो डाउट। इसके आगे जाके हम लोग कुछ सोचेंगे कि इज इन एडवांटेज ऑफ वर्किंग विद 230 वोल्ट और 110 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज, बिकॉज योर लॉसेस आर सेंसिटिव टू फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट एंड very interesting answer to this question ki why we have 230 volt and why US is working 110 volt and why different countries has got different voltage and frequency is whatever coming from the previous governments or people who are ruling that particular continent. Okay, am I clear? Anyone want to ask any doubt here? Okay, I am expecting lot of doubt that will put me in trouble. बच्चों जब तक आप टीचर्स को ट्रबल में नहीं डालोगे कि आपके क्लास में आने के पहले कि टीचर को पढ़ के आना पड़ेगा, जब तक आप इस तरह का कोराम नहीं मचाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न डिफिकल्ट थिंग्स इन योर लाइफ। चलो बच्चों, एनीवन एनी डाउट? चलो, अब वी आर इन इंडिया, तो व्हाट आर आवर वोल्टेजेस? 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेस and 400 वोल्ट थ्री फेस। ओके, एनीवन एनी डाउट? कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। तो कोई बताएगा मेरे घर पे कितना सप्लाई आता है? इज इट सिंगल फेस 230 वोल्ट और इज इट थ्री फेस 400 वोल्ट? सिंगल डू फेस। पार्टिसिपेट। सिंगल फेस 230। सिंगल फेस 230 वोल्ट, आंसर इज करेक्ट। बट इसमें मुझे एक एडिशन करना है, हो सकता है कुछ घरों में थ्री फेस 400 वोल्ट भी आता होगा। एनीवन वांट टू पुट लाइट ऑन दिस? हो सकता है, चलो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चा, आई विल ऑलवेज गिव यू सम विंडो टू आस्क डाउट्स टू यू पीपल आंसर। ओके, कभी कभी अगर आपको बीच में टाइम चाहिए टू नोट डाउन, जब मुझे लगेगा यू शुड नोट डाउन, आई विल आस्क यू टू नोट डाउन, बट sometime I will just go on, because all these PDFs we are going to share with you, all these video lectures will be available with you. If you miss some lectures due to some emergency, those will be available through our backup team. So everything is available here, but hope you will not miss a single lecture, single minute. You are there before 8 o'clock and you will be after 12 o'clock also asking lot of doubts. चलो, anyone any doubt? यस। हाँ, हाँ चलो सर अभी पूछो अगर। इंडिया इंडिया में फॉर नॉर्मल होम यूज 230 वोल्ट आता है, लेकिन जो बड़े बड़े मशीन कंपनीज होते हैं या फिर फैक्ट्रीज वगैरह, तो वहां पे तो 230 से ज्यादा लगता होगा ना। देखो मैंने आपका आंसर हाँ लिखा। हाँ हाँ। गुड गुड गुड, वेरी गुड। ये हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है कि सिंगल फेज कहाँ पे थी। और बच्चों, लकीली दिस इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, लकीली दिस इज पार्ट ऑफ द सिलेबस, एंड ही हैज आस्क्ड द राइट क्वेश्चन कि सर घर पे तो छोटा छोटा सब कुछ है ना, छोटा मिक्सर, छोटा एसी, इंडस्ट्री में तो सब कुछ बड़ा बड़ा होता है, एक बड़ा सा मोटर। ओके, तो कैसे यूज करेंगे? तो दैट इज आवर नेक्स्ट डिस्कशन, बट नेक्स्ट डायग्राम आई वांट यू टू ड्रॉ।
क्योंकि आज दो डायग्राम्स मैं आपको ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा, उसको आपको रिलीजियसली ड्रॉ करना है, बिकॉज वंस दिस इज प्रिंटेड इन योर ब्रेन, इन योर हार्ट, no one is going to stop you to score best in this subject. तो बच्चों, लकीली समवन आस्क्ड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो ये एडवांटेज होता है अगर आप क्वेश्चंस पूछते हो, हाउ डू द अमेरिकन यूज हेवी अप्लायंसेस? शेयर्स, अमेरिकन यूज हेवी अप्लायंसेस, आंसर यहाँ पे है। तो डोमेस्टिक के लिए वो क्या यूज कर रहे हैं? ओके, श्रेयस, हैव आई आंसर्ड योर डाउट? थैंक यू बच्चा। तो हाँ सर, बच्चा बोलो। हाँ तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना होम यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑलमोस्ट उतने ही उसमें इन लोग का थ्री फेज इंडस्ट्री होता यूज के है। लिए हो जाता है। गुड 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 गुड। देखो बच्चों, कितना कितना डीप अंडरस्टैंडिंग है, देखो। सी एंड एवरीवन शुड हैव दिस, मतलब जो हम लोग घर पे यूज कर रहे हैं वो लोग इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब देयर मस्ट बी सम एडवांटेज। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कम वोल्टेज का क्या फायदा हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। चलो बच्चों, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम आने वाला है, तो अपनी कुर्सिया की पेटी थाम लो, बिकॉज ये डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न। तो बच्चों, एज ए यूजर, नाउ दिस इज यूजर, ये यूजर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट इंडिया। तो दिस इज डोमेस्टिक यूजर एंड दिस इज इंडस्ट्रियल यूजर। नाउ व्हाट वोल्टेजेस आर रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक यूजर? डोमेस्टिक यूजर को कितना वोल्टेज चाहिए और इंडस्ट्रियल यूजर को क्या वोल्टेज चाहिए? एवरीवन एग्री विद दिस कि डोमेस्टिक को कितना चाहिए? 230 वोल्ट, और इंडस्ट्री को कितना चाहिए? 400 वोल्ट। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं। आई विल पुट इट बिट, इसको मैं इंडस्ट्री को यहाँ पे लाता हूं और डोमेस्टिक को यहाँ पे लाता हूं। बच्चों, आई वांट टू जनरेट दिस इलेक्ट्रिसिटी which is required at your house, which is required at your industry. तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहां पे जनरेट होगा? किसी को गलती से मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी कहां पे जनरेट होता है? मैं एक नाम बताता हूं। हैव यू हर्ड कोयना नगर? किसी ने नाम सुना है? यस सर। एनीवन फ्रॉम पश्चिम घाट, तो सातारा, कोल्हापुर, कराड? वो डैम है ना वहाँ पे, कोयना डैम। हाँ, वहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग डैम है। डू यू नो द कैपेसिटी ऑफ कोयना डैम? 105 टीएमसी। ओके, आई कम फ्रॉम दैट प्लेस एंड आई एम वेरी प्राउड कि 105 टीएमसी का डैम है बच्चों। आप जस्ट चेक करो आपके आजू बाजू में, मुंबई के बारे में, ये छोटे छोटे डैम्स है विच आर सफिशिएंट फॉर, मतलब अभी का जो बारिश हुआ 15 दिन का, ऑलमोस्ट अवर वाटर लेवल्स हैज गॉन अप टू 50%। कैन यू इमेजिन कितना टाइम लगता होगा कोयना को? ओके, व्हाई सच अ बिग कैपेसिटी? ओनली फॉर गिविंग वाटर टू पीपल? नो, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र ग्रिड कम्स फ्रॉम कोयना। तो वी हैव गॉट जनरेटिंग स्टेशंस। मैंने एक नाम बता दिया, कोयना नगर। आप कोई ऐसे नाम बता सकते हो अदर? दिस इज अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। दिस इज अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ओके, बाय चांस आपको कोई थर्मल पावर स्टेशन मालूम है? इन नासिक, नागपुर, चंद्रपुर सुना है आपने? तो वहां पे कुछ थर्मल पावर स्टेशन है। बकरा योजना। हैव यू हर्ड तारापुर न्यूक्लियर यस पावर सर। स्टेशन? मतलब देखो कितना टाइप से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। वी आर हाइड्रो, हाइड्रो पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, देन न्यूक्लियर पावर स्टेशन. Now, can we have wind energy? Yes, we can have. Tidal energy, we can have. These are non-conventional energies, but very difficult to work with them. But at least हमारा जो most of the electricity आता है, it comes from coal. Now, that is the biggest challenge. No doubt, we can go for nuclear, but there are a lot of challenges of nuclear. What is the biggest challenge of nuclear? दो challenges मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि why we just go on and
न्यूक्लियर वेस्ट, वेरी गुड बच्चों। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग शेयर्स हैज इंट्रोड्यूस कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन होगा तो न्यूक्लियर वेस्ट होगा, तो इट इज ऑलवेज हजार्ड्स, बट इज साइबर थ्रेट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन न्यूक्लियर? डू यू नो व्हाट इज साइबर थ्रेट? Yes, sir. That is Obviously. the biggest challenge, and that is why you people are going to do wonderful things, difficult to manage, because कोई भी कंट्री का कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट रहता है, इट इज ऑलवेज अंडर थ्रेट फॉर साइबर अटैक। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है ओटी, मतलब जितने भी अपने बड़े बड़े बिजनेसेस है, सब आर ऑलवेज अंडर अंडर साइबर थ्रेट। एंड यू पीपल, इफ यू लर्न दिस बेसिक सब्जेक्ट BEE, you are going to learn this key, what exactly are the problem statement and how you can deal with this. चलो बच्चों, now there is going to be generating station, there is going to be generating station, यहाँ पे एक generating station होने वाला है। So this is generating station. Okay, what is the place of this generating station? What is the place of this generating station? Koinanagar, Tarapur, Chandrapur, these are the places. Now, what are this? These are hydro, thermal and nuclear. मैंने सिर्फ कुछ नाम बताया, हाइड्रो, कोयनानगर, चंद्रपुर, थर्मल, तारापुर, न्यूक्लियर। ओके, कोई बताएगा अगर आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रो, तो इसका जनरेटिंग स्टेशन का इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा? ओके, मैं बताता हूं मोटर में क्या होता है। मोटर में इनपुट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आउटपुट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। तो मुझे इस जनरेटिंग स्टेशन का इनपुट क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगा? Mechanical. मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों, देयर शुड बी लॉट ऑफ आंसर्स। तो इनपुट क्या होना चाहिए? मैकेनिकल एनर्जी। तो इनपुट कहां से आएगा, कोई बताएगा? ये इनपुट आएगा कहां से? इफ इट इज अ हाइड्रो पावर स्टेशन, तो ये आएगा प्राइम मूवर से, ये आएगा प्राइम मूवर से। नाउ यहां पे मुझे आपका अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एक प्राइम मूवर का नाम मैं बताता हूं, तो वन प्राइम मूवर नेम इज वाटर टर्बाइन। इफ इट इज अ हाइड्रो पावर स्टेशन, कोई बताएगा? इफ इट इज अ थर्मल पावर स्टेशन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्बाइन? नहीं आया तो पढ़ के बताओ, मैं बताऊंगा, बट बच्चों ये हमको धीरे धीरे आना चाहिए। डू एग्री विद दिस नेम? एटलीस्ट हाँ या ना बोलना चाहिए आपको। देयर शुड बी लॉट ऑफ नॉइज इन दिस क्लास। डू एग्री विद दिस टर्बाइन नेम, स्टीम टर्बाइन? यस और नो बच्चों? तो बच्चों, एस एस अंजेला, थैंक यू बच्चा। तो बच्चों, थोड़ा सा समझ लो कि हाउ थिंग्स हैपेंस इन वाटर टर्बाइन। इन हाइड्रो पावर स्टेशंस देयर विल बी अ डैम, उसका पानी एक टर्बाइन पे जाएगा, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। और इसको क्या बोलते हैं? वाटर टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन को प्राइम मूवर। तो इनपुट इज अ मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट इज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट ये आउटपुट को कुछ इंटरेस्टिंग नाम है, RYB एंड न्यूट्रल। दिस इज अ थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज अ थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, समवेयर वेरी फार एंड, ये बहुत दूर, तारापुर, चंद्रपुर, कोयनानगर, भाखरा नंगल, जितने भी अपनी इंडिया के पावर स्टेशन है, वहां पे दिस इज हैपनिंग। एनीवन, एनी डाउट हियर? किसी को कुछ डाउट है पूछो बच्चों, डू पार्टिसिपेट, दिस इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। आपको ओरल में बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड माय स्टूडेंट डोंट हैव टू मग अप एनीथिंग, विथ proper example they can answer this question. Okay, anyone, anything? Okay, now can I go ahead? तो बच्चों, अब थोड़ा सा अहमद, थैंक यू बच्चा। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा सा अब टेक्निकल चीज। ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, अब इसको हमको ट्रांसमिट करना है। नाउ एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन कि व्हाट वोल्टेज आई शुड ट्रांसमिट, कितना वोल्टेज ट्रांसमिट करना चाहिए। योर ऑप्शंस आर 230 वोल्ट और 400 वोल्ट। इनिशियल ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड, दोनों में से एक ऑप्शन बोलो। It योर depends. ऑप्शंस आर 230 वोल्ट और 400 वोल्ट। It depends, sir. डिपेंड्स, बट जनरेट तो एक ही करना पड़ेगा ना, मतलब दोनों जनरेट नहीं कर सकते ना, हमको इंडस्ट्री को भी देना है और डोमेस्टिक को भी देना है। तो ऐसा वोल्टेज जिसमें दोनों हो, 400.
400 का एडवांटेज होता है कि 400 से आप 230 भी ले सकते हैं। बट वेट अ मिनट, कि आपने अगर 400 डायरेक्टली जनरेट किया तो देर आर सम चैलेंजेस। अब सब लोग कैलकुलेटर, अपना मोबाइल फोन, सब कुछ लेके बैठना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है आज का। तो बच्चों, आई वांट टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी। तो सपोज आई वांट टू ट्रांसमिट, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आई वांट टू ट्रांसमिट 1 मेगावाट। P is the power I want to transmit. What is 1 megawatt? Is it correct? कितने लोग को बिलियन मिलियन समझ में आता है? रेज योर हैंड। Now this is the biggest challenge. I'm a placement coordinator for Vidyalankar Institute of Technology for my department. और बच्चों, very few of us understand these billions and millions, and your entire interview works on this unit. Okay, तो बच्चों थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको पूछता हूं। 1 बिलियन मतलब कितना? इज इट 10 lakhs? एम आई राइट? चलो एटलीस्ट एसनो एसनो बोलो। 1 बिलियन इज हाउ मच? Yes. Other is saying 100 crore. Okay, and 1 million is how much? 1000 billion. Okay, तो बच्चों कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। तो कोई बताएगा व्हाट इज आवर पॉपुलेशन? हमारा पॉपुलेशन कितना है? देखो मैंने क्वेश्चन चेंज किया बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस। ओके, व्हाट इज आवर पॉपुलेशन? इज इट अराउंड 700 crore? सॉरी, 130 crore? एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ आवर वर्ल्ड? अपना इंडिया का पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है? इज इट अराउंड 700 crore? 8 billion. Very good. Okay, now 8 billion is how much? Is it 800 crore? 1 billion is 100 crore. Very good. So 800 crore is our population. कुछ आप बोलेंगे आप क्यों पूछ रहे हैं सब पीछे इतना? ओके, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू टेक टू द टेक्निकल वर्ड। बच्चों, आप लोग फोन यूज करते हो, मोबाइल फोन। तो एक वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है आईपी एड्रेस। डू यू नो दिस? हर मोबाइल फोन का एक आईपी एड्रेस होता है। Yes. हम्म, देखो अभी आपको बहुत इंटरेस्ट करेगा। बच्चों, हमको कितने आईपी एड्रेस चाहिए? हाउ मेनी आईपी एड्रेसेस वी नीड? हाउ मेनी आईपी एड्रेसेस वी नीड? 800 crore. डू यू नीड 800 और 8 बिलियन आईपी एड्रेस या इससे ज्यादा? बिकॉज नाउ, बिकॉज ऑफ आईओटी, हर एक डिवाइस को आईपी एड्रेस चाहिए। एंड द बिगेस्ट चैलेंज विथ आवर सिस्टम इज IPv4। और IPv4 सिर्फ 400 करोड़ आईपी एड्रेस जनरेट करता है। एंड दैट इज द लर्निंग दैट यू हैव टू डू। और बच्चों, इंटरव्यूज में सब पूछा जाएगा बिलियन मिलियन, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। गुड अंडरस्टैंडिंग। आई एम वेरी हैप्पी द वे you have actually understood this billion million, because in this world of placement you will be always be asked these questions। तो इसको बाहर करके जाने का, अच्छे से समझ के जाने का। चलो बच्चों, तो नाउ इसकी हाँ बच्चों, IPv4, व्हाट इज IPv4? IPv4 क्या होता है? IPv4 इज द बेसिक स्टैंडर्ड जो हम लोग यूज करते हैं। अभी क्या तो इस होगा? हाँ, अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि इतने सारे आईपी एड्रेस चाहिए और हमारे पास आईपी एड्रेस कम है। तो हमको एक्चुअली करना पड़ता है एक पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी, ऐसा करके हम लोग चला रहे हैं सब कुछ। बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जनरेट दिस मेनी आईपी। एंड देयर इज वन मोर स्टैंडर्ड नोन एज IPv6। some countries have migrated. So country like Vietnam has completely migrated with IPv6, and this is the wonderful world of computer networks. And you people are going to do wonderful things. So IPv4 is standard that entire uh, words follow. So IP stand for Internet Protocol version 4, and IPv6 stand for IPv6. तो यहाँ पे सिर्फ 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। तो कितने आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं? 2 raised to 32, एंड दिस नंबर कम्स लाइक दिस। तो everything boiled down to electronics, electrical engineering. So though you are going to become computer engineering, this calculation is going to help you a lot. चलो बच्चों, थोड़ा सा डाइवर्जन कभी कभी होगा, बट इट इज फॉर गुड। तो बच्चों, मुझे 1 मेगावाट पावर चाहिए। एग्जाम्पल, क्या
बट डू यू नो एक्चुअल पावर इज इन गीगावाट? एक्चुअल पावर इज इन गीगावाट. तो बच्चों, अब होप एवरीवन हैज गॉट कैलकुलेटर विथ यू. होप एवरीवन हैज गॉट कैलकुलेटर विथ यू. ओके, कोई बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? चलो एवरीवन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? इज इट V into I? एटलीस्ट मैं, आपको नहीं आया तो मैं आंसर भी दूंगा, तो एटलीस्ट आपको एस नो बोलना है. आर्यन, थैंक यू. और अगर आपने अनम्यूट करके बोला, आपने वीडियो ऑन करके बोला, तो इट विल बी वंडरफुल. आज सेकंड हाफ में नेक्स्ट लेक्चर एवरीवन, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए. थोड़ा सा मैं फॉर्मूला चेंज करता हूं. कैन आई राइट आई स्क्वायर इंटू आर, और कैन आई राइट वी स्क्वायर बाय आर? आर दिस पॉसिबल फॉर्मूला? आर दिस फॉर्मूला करेक्ट? यस. ओके. ओके, ये फॉर्मूला आया कहां से? ओम्स लॉ से. इज बेसिक लॉ V इक्वल टू आई आर. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमको कंफ्यूजन होता है, याद नहीं रहता है, एंड फॉर दैट पर्पज आई एम हियर. आपका जितना भी कंफ्यूजन होगा, आई विल रिपीट मल्टीपल टाइम्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स. ओके, तो देयर आर थ्री फॉर्मूलाज फॉर पावर, P इक्वल टू V इंटू आई. तो कैन आई यूज दिस फॉर्मूला V इंटू आई? ओके, हमने कौन सा वोल्टेज सिलेक्ट किया है? 400. तो कोई कैलकुलेट करके बताएगा व्हाट करंट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 1 मेगावाट पावर? कितना करंट लगेगा क्विकली? तो इट इज 10⁶, 25. ओके, इज दिस करंट वेरी लार्ज? इज दिस करंट वेरी लार्ज? इतना करंट ट्रांसमिट करना प्रैक्टिकली वेरी वेरी डिफिकल्ट. मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं. ओके, अभी आपके लैपटॉप को आपने एक केबल जोड़ा है. कैन यू सी दैट केबल? सिमिलरली, कैन यू सी अ केबल दैट इज गोइंग टू योर ट्यूबलाइट, फैन? ओके, एक छोटा सा केबल होता है बच्चों, और वो केबल होता है 5 एम्पियर का. वो केबल कितने एम्पियर का होता है? 5 एम्पियर का, बिकॉज आपका स्विच 5 एम्पियर का है. बट बच्चों, अगर आपने गीजर का केबल देखा, तो वो थोड़ा बड़ा होता है. कितना एम्पियर का होता है वो केबल? 15 एम्पियर का. तो आपके घर में आपको ये दो प्लग्स दिखेंगे, 5 एम्पियर एंड 50 एम्पियर. तो बच्चों, अगर 15 एम्पियर के लिए मुझे इतना मोटा केबल लग रहा है, तो कैन यू इमेजिन व्हाट कैन बी द साइज ऑफ दिस? इतना बड़ा ट्रांसमिशन वायर कैन आई हैव? प्रैक्टिकली वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल. बच्चों देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है. ट्रांसमिटिंग 2500 एम्पियर करंट, दैट टू 1 मेगावाट. इमेजिन अगर ये 100 मेगावाट होगा तो क्या होगा? इमेजिन 1000 मेगावाट होगा तो क्या होगा? अगर ये 100 गीगावाट होगा तो क्या होगा? व्हाट विल बी करंट? ओके, डू यू एग्री विद दिस कैलकुलेशन? इफ आई वांट टू ट्रांसमिट पावर इन गीगावाट, the current requirement I cannot maintain in the conductor. Size of the conductor will be beyond practical limit. Do you agree with this calculation? कोई इसका solution बताएगा? What can be solution? मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी thousands of megawatt में भेजनी है. 100, 200 gigawatt, 500 gigawatt, 1000 gigawatts में भेजनी है, and I want to reduce this current. What I can do? Can I increase voltage? बच्चों देखो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कैन आई मेक वोल्टेज इक्वल टू 400 केवी? अगर बच्चों मैंने वोल्टेज को 400 केवी किया, तो व्हाट विल बी माय करंट? व्हाट विल बी माय करंट? नाउ वोल्टेज इज 400 केवी. व्हाट इज केवी? कितना होगा करंट? यू शुड बी वेरी गुड इन द कैलकुलेशन. जस्ट टेल मी, इज माय 2.5. कैलकुलेशन करेक्ट? इज माय कैलकुलेशन करेक्ट? एटलीस्ट वेरीफाई करके बताओ. Using Yes. AI, nothing wrong, but at least verifying the outcome is very important. तो बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? इस प्रॉब्लम सॉल्व. डोंट ट्रांसमिट 400 वोल्ट, ट्रांसमिट 400 किलो वोल्ट, एंड देन एट द रिसीविंग एंड उसको कम करो. बट अगेन देयर इज अ चैलेंज. अगेन देयर इज अ चैलेंज. कोई बताएगा व्हाट इज द चैलेंज? चैलेंज क्या है? आई कैनॉट जनरेट सच अ हाई वोल्टेज इन वन स्टेज. मैं इतना बड़ा वोल्टेज यहां पे नहीं जनरेट कर सकता. It is impossible or very difficult to have generator of this capacity. Practically कितना जनरेट कर सकते हैं? 11 kV, 33 kV, 66 kV, ऐसा जनरेट कर सकते हैं. बट मुझे चाहिए कितना? ध्यान से प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. मुझे चाहिए कितना?
हाउ मच आई वांट। ओके, इस बॉक्स में क्या होगा जो इस 11 को 400 बना सकता है? एवरीवन शुड आंसर। इस बॉक्स में क्या डाल सकते हैं? व्हाट आई कैन पुट इन द बॉक्स? व्हाट आई कैन पुट? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड आंसर्स, गुड आंसर्स। बट बच्चों, कैन यू सी, देखो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर नाम नहीं बताया, आपने खुद बताया कुछ लोगों ने, बाकी लोग को भी मैं बताऊंगा। तो आई नीड अ डिवाइस विच कैन स्टेप अप दिस, विच कैन स्टेप अप दिस। तो आई कैन हैव अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, I can have a step-up transformer. Can you see a very interesting symbol of the step-up transformer? Primary, less number of turns. Secondary, more number of turns. And these two lines representing core made up of iron on which these two windings are wound. मतलब symbol also play a very important role. तो बच्चों, अगर आपने ये डायग्राम समझा तो आपको बीडब्ल्यू का 30-40% पार्ट आज ही पता चलेगा। इसके बाद मेरा काम बहुत आसान होने वाला है। I'm just going to teach you some calculations, some additional things, and things are going to be very interesting. अब बच्चों ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, अब ध्यान से देखो, दिस इज जनरेटिंग स्टेशन, दिस इज जनरेटिंग स्टेशन, दिस इज ट्रांसमिटिंग स्टेशन, दिस इज ट्रांसमिटिंग स्टेशन। तो बच्चों ट्रांसमिशन स्टेशन में क्या होगा? ट्रांसमिटिंग स्टेशन में होगा एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर जो जनरेटेड वोल्टेज को स्टेप अप करेगा। देन कम्स लॉन्ग ट्रांसमिशन वायर्स, बहुत लंबे लंबे ट्रांसमिशन वायर्स। दीज लॉन्ग ट्रांसमिशन वायर्स कितने लंबे? 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। डू एग्री विथ मी? कहां से कहां कैरी करेंगे? तारापुर से आपके सिटी तक लेके आएंगे, चंद्रपुर से आपके सिटी तक लेके आएंगे, कराड़ से कोयना नगर से आपकी सिटी पे लेके आएंगे। सो दीज आर द ट्रांसमिशन वायर्स, दीज आर द ट्रांसमिशन वायर्स। बट मोमेंट दे कम क्लोज टू योर सिटी, ये आपकी सिटी के नजदीक आते हैं, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। कोई बताएगा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बराबर उल्टा करना पड़ेगा। कोई बताएगा व्हाट शुड बी इनसाइड दिस बॉक्स सो दैट आई कैन Step डू down रिवर्स? transformer. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसका सिंबल क्या होगा? बताओ चलो जल्दी जल्दी। व्हाट विल बी प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न्स? यहाँ पे प्राइमरी विल बी हैविंग More turn. स्टेप डाउन का। हाँ चलो बताओ बताओ। प्राइमरी मोर नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेकेंडरी लेस नंबर ऑफ टर्न्स। गुड जॉब बच्चों। तो प्राइमरी मोर नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेकेंडरी लेस नंबर ऑफ टर्न्स। गुड जॉब, गुड जॉब। अब बच्चों ध्यान से देखना, कितना वोल्टेज आया यहाँ पे वापिस? कोई बताएगा व्हाट इज वोल्टेज हियर? 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी। ओके, शुड इट डायरेक्टली गो टू इंडस्ट्री और डोमेस्टिक यूजर, या इसको बीच में कुछ इंटरवेंशन चाहिए? कैन आई यूज दिस वोल्टेज डायरेक्टली? कैन आई यूज दिस वोल्टेज डायरेक्टली? चलो, आई वांट टू नो, इज इट स्टिल लिटिल बिट हाइयर? ये अभी भी ज्यादा है क्या? ओके बच्चों, इसको बोलते हैं रिसीविंग स्टेशन, इसको बोलते हैं रिसीविंग स्टेशन। ओके, बाय चांस डू यू नो दिस प्लेस? एटलीस्ट एक आंसर आना चाहिए। डू यू नो दिस स्टेशन नेम? गुड। कहां पे है बच्चों? इज इट इन मुंबई? थाने में है ना? इज इट इन थाने के? वेरी गुड। एंड फॉर मुंबई वी हैव गॉट 400 केवी रिसीविंग स्टेशन एट कलवा। अगर आप देखोगे ट्रेन से बाहर अंदर तो आपको एक बड़ा सा फैसिलिटी दिखाई देगा, अराउंड 20 एकर्स 30 एकर्स, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टेशन है। बट बच्चों ये 11 केवी 33 केवी तो अपना यूज का नहीं है, तो क्या करेंगे? बाय चांस कोई बता सकता है कि आप कौन से एरिया में रहते हो? अपने अपनी चैट बॉक्स में डाल दो तो मैं थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। डू यू स्टे एट कुर्ला? डू यू स्टे एट अंधेरी? डू यू स्टे एट दादर? एनीवन स्टेज एट दादर, माटुंगा, चेंबूर, बोरिवली, अंधेरी? तो बच्चों वेरी गुड, वेरी गुड। मीर, अंधेरी, अहमद, थाने। चलो मुझे पता भी चलेगा कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो मेनी पीपल आर फ्रॉम अंधेरी, बोरिवली। गुड गुड, आई शुड गेट एक्चुअली घाटकोपर। तो बच्चों आपका जो एरिया रहेगा उस एरिया में एक वापिस इसका छोटा रिप्लिका रहेगा। देखो ध्यान से देखो क्या रहेगा?
एक वापिस कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों यहाँ पे? व्हाट शुड बी हियर? तो दिस कैन गिव यू दिस 400 वोल्ट। यहाँ पे क्या होना चाहिए? इसका इनपुट ये होगा, what should be step inside down. this? Again step down, very good. Again step down. Again, what is the symbol? बट ऐसा, ये जो स्टेशन है इसको बोलते हैं सब स्टेशन। ये होगा सपोज अंधेरी का, बोरिवली, थाने, घाटकोपर। तो हर सबब में ऐसा सब स्टेशन होगा। डू एग्री विद दिस? डू एग्री विद दिस? यस और नो? यस सर। तो देयर विल बी मल्टीपल सबस्टेशंस, देयर विल बी मल्टीपल सबस्टेशंस। और इस सबस्टेशन का आउटपुट क्या होगा? 400 किलो वोल्ट। इस सबस्टेशन का आउटपुट क्या होगा? 400 किलो वोल्ट। तो हैज इलेक्ट्रिसिटी रीच टू योर होम? नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा। इलेक्ट्रिसिटी किसको मिला है अभी तक? अभी तक इलेक्ट्रिसिटी किसको मिला है? अब सब लोग थोड़ा ध्यान दो। हमें सिर्फ इंडस्ट्री को देना है, बिकॉज ये थ्री फेज, तो दिस इज थ्री फेज, दिस इज थ्री फेज 400 वोल्ट एंड दिस इज सिंगल फेज। तो हमको सिर्फ इंडस्ट्री को देना है। कोई बताएगा आप हाउ टू गिव इलेक्ट्रिसिटी टू द डोमेस्टिक यूजर? डोमेस्टिक यूजर को कैसा देंगे? एनीवन, एनी आइडिया हाउ इलेक्ट्रिसिटी विल बी गिवन टू डोमेस्टिक यूजर? बाई चांस थोड़ा सा ट्राई करो। यहां तक हम पहुंच गए, हमने 400 वोल्ट थ्री फेज स्टेप डाउन कर लिया। अंधेरी में एक, बोरावली में एक, थाने में, घाटकोपर में, सब एरियाज में सबस्टेशन डाल दिए। चलो अब सबसे इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन। तो बच्चों, ये आपके सोसाइटी का वायरिंग है। दिस इज RYB एंड दिस इज न्यूट्रल। नाउ दिस इज थ्री फेज सप्लाई दैट विल कम टू योर सोसाइटी। ये आपकी सोसाइटी के एंट्री में आएगा, ये आपकी सोसाइटी के एंट्री में आएगा। अब क्वेश्चन इज, आपके सोसाइटी में थ्री फेज सप्लाई क्यों चाहिए? There are two important application in your society that runs on three phase supply only. कोई बताएगा what is the name of this application? Left है. Left. Very good. और एक good. I'm very happy. बच्चों, frankly speaking, I'm more than happy today. I haven't got these answers before. Okay. लिफ्ट में होता है थ्री फेज मोटर और वाटर पंप। जो डू यू नो, एक वाटर पंप होता है जो आपका अंडरग्राउंड टैंक रहता है, उसका पानी ऊपर ओवरहेड में लेके जाता है, उसका भी मोटर होता है थ्री फेज मोटर। देखो ये सब अपना सिलेबस है। तो दैट इज द रीजन वी नीड थ्री फेज सप्लाई। बट आपको कैसे सप्लाई मिलेगा? हाउ यू विल गेट द सप्लाई? आपको सप्लाई कैसे मिलेगा? सपोज दिस इज योर हाउस, ये आपके घर का नंबर है 420, ये आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर है। ओके, होप योर गर्लफ्रेंड स्टेज इन योर सेम सोसाइटी, हर फ्लैट नंबर इज 840। तो बच्चों कैसे, इनको कैसे सप्लाई मिलेगा? लेट्स चेक। ध्यान से देखो, बिटवीन दिस टू आई गॉट 230 वोल्ट, बिटवीन Y and B I got 230 volt, and between बच्चों ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, इंटरेस्टिंग भी है। बिटवीन दिस टू आई गॉट 400 वोल्ट R and Y, between Y and Y I got 400 volt, between R and ओके। बच्चों ध्यान से देखो, आपने अभी शुरुआत में लिखा नहीं भी तो चलेगा। तो कैन आई कॉल दिस वोल्टेजेस एज VRY, VYB and VBR? बच्चों these are called as line voltages. These are called as line voltages. This is VL और ये इंडिया में कितना है? 400 वोल्ट, जिससे आपका थ्री फेज का काम चल जाएगा। बट अब वेट अ मिनट, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बिटवीन आर एंड न्यूट्रल, between R and neutral, what is the voltage? 230. Between Y and neutral, what is the voltage? 230. And between B and neutral, voltage is 230 volt. Okay. अब मुझे बताओ आपके घर पे सप्लाई कैसे आएगा? सपोज यू आर स्टेइंग इन फर्स्ट सेकंड फ्लोर, your girlfriend is staying at third floor.
तो आपको सप्लाई कैसे आएगा? देखो आपका सप्लाई देखो कितना इंटरेस्टिंग तरीके से आ रहा है. योर सप्लाई विल कम लाइक दिस. योर सप्लाई विल कम लाइक दिस. चूज दिस. कोई बताएगा कैसे सप्लाई आ रहा है? आपके घर पे क्या आएगा बच्चों? एक होगा फेस और एक होगा न्यूट्रल. डू एग्री विद दिस? तो बच्चों आपको घर पे कितना वोल्टेज मिला? 400 वोल्ट मिला या 230 वोल्ट मिला? 230. प्लीज. 230. तो आपको 230 वोल्ट स्टेप डाउन करने का जरूरत नहीं होता है. आपके 400 वोल्ट में ही 230 छिपा है. इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग? मतलब हमको क्या लगा होगा, अरे वापिस हमको 400 को 230 में स्टेप डाउन करना पड़ेगा. नहीं, वही थ्री फेज में आपको 230 मिलेगा. बट वेट अ मिनट, हर एक फ्लोर को शायद अलग अलग जाएगा. यहाँ पे भी 230 जाएगा. बट व्हाट इज डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? आपको कौन सा फेज मिल रहा है? विच फेज यू आर गेटिंग? बी. और आपकी गर्लफ्रेंड को कौन सा फेज मिल रहा है? वाई. तो दिस इज द वे सप्लाई कम्स टू यू. इसमें मैं और बात करूंगा बट थोड़े देर के बाद. एनीवन एनी डाउट टिल नाउ? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. ये आपका सब concepts, oral, your all questions related to single phase, three phase, and everything I'm going to repeat in many of the lecture. At this stage, any doubt? Because I want to take some time pause because I know that at some places you have to note down certain things. Anyone, any doubt till now? Chalo. Now, please draw this diagram religiously. इसको बहुत religiously draw करो. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट. अभी तक मैंने कुछ भी आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा, बट फर्स्ट टाइम आई एम आस्किंग यू टू ड्रॉ. तो प्लीज ड्रॉ दिस वेरी रिलीजियसली. यहाँ पे सब देखो कैलकुलेशंस है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें है. Please feel free. I'm taking a little bit pause from my side because I can keep on telling lot of interesting things, but sometimes you need some processing time, and this is the best time. Give yourself 15 minutes and draw this in the best possible way. बच्चों, as it is the online mode and Vidyalankar believes student first policy, आपको जो भी लगता है ड्यूरिंग लेक्चर कैसे पॉज होना चाहिए, कैसे ब्रेक होना चाहिए, यू कैन ऑलवेज गिव फीडबैक एंड सम गुड सजेशंस रियली विल इनकॉर्पोरेट. तो वी डोंट बिलीव कि एट द एंड ऑफ द this particular batch will take a feedback and in next batch will improve. Every lecture we are ready to improve. हर लेक्चर में हम improve करने के लिए तैयार है if it is really benefiting our students. तो आपको कभी भी कुछ भी लगता है, you're always allowed to DM me. सुबोध सर, वैभव सर से भी आप बात कर सकते हैं. दे ऑलवेज गिव अस फीडबैक कि सर आपको थोड़ा सा ऐसे बैठना है, आपको ऐसे बोलना है कि स्टूडेंट विल बेनिफिट मोर, बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली थिंक कि हाउ स्टूडेंट विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस लेक्चर्स. ओके, जैसा मैंने बोला था, समटाइम्स यू आर अलाउड ऑल्सो टू कम ऑफलाइन फॉर सम डाउट्स. वी कैन मीट फिजिकली and we can talk. At our centers we have got smart boards. I can also come up with some components, breadboard, power supply, some multimeter. I can show you how to do practicals for BEE because इसके practicals बहुत interesting होते हैं. Many people find it difficult. बच्चों, has your admission process started? थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा लिखते लिखते कुछ क्वेश्चंस आंसर करना. Okay, तो right now you are at what stage? Like documents submit हो गए sir. Now after a few days, provisional merit test is going to come. चलेगा. तो keep on updating us also. If you need any help at Vidyalankar, we got some very interesting webinar. So Vidyalankar College conduct lot of interesting webinars, online, offline. We'll also let you know through our
would take a lot of efforts how students should get best possible information from Vidyalankar. We are constantly improving ourselves. Just sometime I'm asking you to draw, just to take a pause, that I keep on talking, because sometimes you may get overwhelmed by the amount of information. बच्चों, द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट डू इन द ओरल एग्जामिनेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और मुझे बताना कि क्या मिस्टेक है. We ask student what is use of transformer. They say transformer converts AC to DC. Is it correct or is it wrong? Wrong. Partially correct. Partially correct. सब लोग इतना तो. और बच्चे देखो, जब आंसर एस नो में होगा तो एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, एटलीस्ट इन चैट बॉक्स. ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स एसी टू डीसी. तो एक ने बोला रॉन्ग, एक ने बोला पार्शियली कनेक्ट. आई वांट ऑल 29 आंसर्स इंक्लूडिंग होस्ट को होस्ट. चलो बच्चे बताओ, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? आपके सामने है आंसर बच्चों. श्रवण, इज इट करेक्ट और इज इट रॉन्ग? Wrong. Very good. Wrong. Good. Very good. Angela has asked very interesting question. The second transformer is called as a step down transformer. Both the transformer are called as step down. A receiving station ka as well as substation ka. Okay. Definitely it is wrong. ट्रांसफॉर्मर डू नॉट कन्वर्ट एसी टू डीसी. बच्चों देखो, हम लोग मैकेनिक्स लेक्चर में और बीडब्ल्यू लेक्चर में बहुत हाईलाइट करेंगे चीजों को, बिकॉज वी नो दैट कि देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग event that is going to happen at the end of the semester, known as oral examination, viva examination, where you people miserably fail. आप बहुत खराब करते हो because you people do not interact. Best example right now कि जब आपके पास ऑप्शन है एस नो का, तभी भी हम लोग नहीं करते. And at the time of oral we are not ready to answer. And imagine placement में आप गूगल का इंटरव्यू दे रहे हो, फेसबुक का इंटरव्यू दे रहे हो, यूट्यूब का इंटरव्यू दे रहे हो, and if you are so shy or so lazy, what may happen? तो थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा अपनी स्किल्स पीछे ले लो, इंटरेक्ट करो, बात करो, मेक अ लॉट ऑफ नॉइज इन दिस पर्टिकुलर क्लास. ओके एंजेला, हैव आई आंसर्ड यू? इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. चलो बच्चों, आप मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूं. होप यू आर नोटिंग डाउन द थिंग्स. ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स एसी टू एसी. इज इट करेक्ट? ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स एसी टू एसी. इज इट करेक्ट? यस और नो? करेक्ट और रॉन्ग, इतना दो बताना है आप. चलो चैट बॉक्स में वीडियो ऑन करके एस 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 एस. गुड. ओके, नाउ आउटपुट वोल्टेज कैन बी लेस और मोर देन इनपुट वोल्टेज. यस और नो? If output voltage is more, it is a step up transformer. If output voltage is less, it is a step down transformer. Good job. देखो बच्चों, आपका ट्रांसफार्मर टॉपिक का बहुत सारा पार्ट तो अभी हो गया. सिंगल फेज, थ्री फेज हो गया. गुड. आकांक्षा, ओम, थैंक यू वेरी मच. अब धीरे धीरे आपके माइक्रोफोन्स ऑन होने चाहिए, either this lecture, next lecture, and your video should be also very on. Okay. See, it is a very good opportunity to wear some interesting t-shirts, jackets, because rainy season, थोड़ा सा show off करो, turn on करो videos. Okay. Hope you are noting down each and everything, minute detail, note down 11 kV, 33 kV, 400 kV. Because कुछ interesting insights I'm going to draw.
Sir, what does RYBN stand for? Could you repeat again? हाँ कि बच्चा RYB are the color name, Oh, okay. red, yellow, blue, and N for neutral. जनरली इसके लिए ब्लैक कलर होता है. These are some color codes used to represent phase number 1, phase number 2, phase number 3. हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि इसको 1 2 3 क्यों नहीं बोला, XYZ क्यों नहीं बोला, ABC क्यों नहीं बोला, इसको कलर के नाम क्यों दिए. एंड बच्चों एवरीथिंग इज लॉजिकल. use your AI in a best possible way. For my subject, I will also let you know how to Google, how to chat GPT. I'll give 10 to 15 minutes whenever I want you to note down something, but do it very religiously because बच्चों थोड़ा सा हमारा disadvantage है with everything coming on digital media. We have stopped noting down the things. Okay, कोई बताएगा what is SS stand for? Substation. Very good. Good memory. बच्चों देखो इस एक डायग्राम में क्या क्या है. जनरेटर है, ट्रांसफॉर्मर है, सिंगल फेज है, थ्री फेज है, कैलकुलेशन ऑफ पावर है, थ्री डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ पावर. Today's lecture will play a very important role in your entire life. That type of impact I want to create, and I want this impact to be there in your entire life. कि आपको जितना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होना चाहिए उतना मैं in a best possible way I'll try to deliver today. But one thing is there has to be lot of doubts from your side, because when even I keep asking doubts sometimes कि why this हमने 230 वोल्ट ही क्यों लिया, तो बहुत सारा ये करने के बाद यूके तो हम चेंज कर सकते थे क्या उसको. तो ये सब कीप ऑन आस्किंग डाउट्स. घर पे ये वायर क्यों यूज किया, ये स्टैंडर्ड वाला क्यों किया, 5 स्टार वाला इसी क्यों लेना चाहिए, इतना महंगा है तो भी. ऐसे डाउट्स आने चाहिए. Okay, intentionally I'll keep mum for next 4 5 minutes. Hope after 5 minutes everyone will tell me you've drawn this diagram in the best possible way. Draw the symbols in a proper way. Primary winding, secondary winding, more turns, less turns. Okay, in advance I will announce we'll have a break at 10 o'clock. So I know that you always, if you know कि आधे घंटे में break होने वाला है, your mindset becomes a little bit fresh. For your college choice, for your branch choice, be very focused, be very vocal, ask experts about your college choice, your engineering side, computer, IT, electronics. If someone is dropping to Vidyalankar, he can come to me. I'm there. कभी आप अगर आते हो कुछ डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए विद्यालंकार में वगैरह, तो आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. Tell your friends regarding the starting of our batches. Hope
You have liked the way we have started, but we also finish on the same tempo. We got a lot for you in this semester. Do finish the subjects in vacation batches only, because you know that your admissions बहुत late होते हैं. Do you know what are the possible dates of your college start? Anyone? Any guess? एंड और सितंबर स्टार्टिंग. हाँ. और आपकी एग्जाम कब होती है फाइनल? वेरी अर्ली, 1 मंथ 2 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ में आपके सब एग्जाम्स खत्म होते हैं. तो बच्चों, जितना आप अभी मेहनत करोगे उतना आपका फायदा होने वाला है. Hardly you get 2 months time or less than that for the entire semester. So your first semester is always very compressed, or well begun is half done, you know. So maths, mechanics, BEE, you are going to be master of this subject. But you do interact with our teachers. We have got best of the faculty. I think आपके 1-2 lectures हो चुके होंगे ना. Mechanics lecture is there. हो गया ना mechanics का lecture? Hello? Maths का भी हुआ Yes, होगा. Hope you enjoyed all those lectures. We repeat difficult concepts multiple times. We got a lot of patience. We feel proud if you ask doubts. If you have some difference of opinion about any concepts, we respect that. Okay, can I go ahead? I want all जब मैं कुछ लिखने के लिए बोलूंगा, तो I expect everyone to give me thumbs up, so that I want no one is left behind. No doubt ये बाद में आपको मिलेगा, बट उसका इम्पैक्ट नहीं होता बच्चों, अगर आप टाइमली लिखते हो. गुड जॉब, गुड जॉब. थैंक यू. ओके, डू नोट डाउन दिस डायग्राम. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके बच्चों, इसके डिटेल्स वापस आने वाले हैं व्हेन यू लर्न ऑल द टॉपिक्स. ओके, दिस इज okay. One important question: which supply comes to society? Is it single phase or is it three phase? 3 phase. Three phase. Very good. Which supply come to your flat? Is it single phase or is it three phase? Single phase. Very good. Good job. Over the period of time, I'm feeling very overwhelmed. Thank you very much, Bacho, for interacting so well. Okay. Do you know your flat number? For example, 420. And only for example, what is the flat number of your girlfriend? 840. Okay, again, 5 minutes time, 5 to 7 minutes time. Finish this. Okay, are you okay with the speed with which right now I'm going? If it is fast, if it is slow, let me know. Thank you, Bacha. Tanisha, thank you. Okay, I'm pronouncing your names first time. तो अगर कुछ pronunciation में गलती है तो मुझे बता देना. Okay, hope you are also comfortable with our starting time, 8 o'clock. Okay, what is a good time to wake up? What is a good time to wake up? Okay, there are two concepts, according to Indian standard. One is Brahma Muhurta and one is Tajud. कोई बताएगा what is Brahma Muhurta? Tanisha?
Shreyasi, Shravan, what is Brahma Muhurta? 3 a.m. Good, good, good. But if you want to achieve really good in your life, you should start your day with Brahma Muhurta. Okay, Sultan, what is Tajud time? At 4 o'clock, sir. 4 o'clock. Okay, see how our faiths go hand in hand. In both the faiths, we say if we start our day, then at 4 o'clock, Almighty is there and He's asking, what you want. Brahma Muhurta, your mind is very fresh. So, bachcho, have some really great targets. Yes, Akansha. One more doubt is the voltage between any other wire and neutral wire is always 230 and between the rest is 400. हाँ, तो इसको मैं बच्चा ऐसा बताऊंगा. Between R and Y, Y and B and B and R, it is 400 volt. And between R and neutral, Y and neutral and B and neutral, it is 230 volt. Am I clear, बच्चा? Yes, sir. Thank you. थैंक यू बच्चा. तो ये जो होता है 400 वोल्ट उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज और ये जो 230 है इसको बोलते हैं फेज वोल्टेज. ओके, डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन दिस टू? कोई बोलेगा एक फैक्टर है, देखो कोई बोलेगा व्हाट इज 400 डिवाइडेड बाय 230, इज इट √3? समवन प्लीज क्विकली कैलकुलेट. समवन प्लीज क्विकली कैलकुलेट. Is 400 divided by 230 is √3? Confirmation. Yes. और बच्चों हम लोग प्रूव करने वाले हैं VL equal to √3 times V phase. And it may be US standard, it may be UK standard, it is always true. Line voltage and phase voltage may we have got this relationship. Okay, hope we are close to our 5 minutes break. We are almost 20 minutes away from our first break, today's break. Second break will be at 12 o'clock. Second break I am calling because at 12 o'clock officially I will end my lecture, but I will be there with you to interact, to answer your some other doubts also about subject, about college. Okay. Are you done? Now this diagram also you should note down very carefully. If you finish, please give me thumbs up. Chalo. But only one thumbs up. So should I wait? और बच्चों वेट है तो वेट भी लिखो. बच्चों सर 2 minutes 2 minutes ये भी लिखा तो चलेगा. Because we don't want to be very fast, very slow. चलो बच्चों अब कुछ interesting questions. I want you to answer that question. बच्चों ध्यान से देखना और बताना. If I got a very huge society, मेरा सोसाइटी बहुत बड़ा है. Now next few minutes you are not supposed to write anything, but you have to answer some very interesting questions. अगर आपका सोसाइटी बहुत बड़ा है, for example some 100 apartments are there in the society, will you go for this और ये डायरेक्टली आप 11 के भी ले सकते हो? फर्स्ट टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? अगर आपका सोसाइटी प्रीमाइसेस बहुत बड़ा है, यू हैव गॉट 100 बिल्डिंग्स इन योर सोसाइटी, लाइक भीमा शंकर in our Nerul, we have got a very huge society. जहाँ पे there are multiple buildings. So what you will prefer to go by this conventional way कि MACB step down करके देगा, या can you have this 11 kV directly in your premises? Your take. आपका ओपिनियन डायरेक्टली 11 kV. What is the advantage of doing this? वो जो वाया आ रहा है उसमें से लॉसेस आएगा. तो what you can do, you can directly take 11 kV, 33 kV, 11 kV से काम चल जाता है. 11 kV directly comes to your premises in your society and then you step down at your place. तो बच्चों आपने कभी देखा है कि सोसाइटी के अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है, तो दैट सबस्टेशन इज इनसाइड द ट्रांसफार्मर. एवरीवन ओके विद द कंसेप्ट कि देयर कैन बी ट्रांसफार्मर इनसाइड द सोसाइटी प्रोवाइडेड दैट सोसाइटी हैज टू बी ह्यूज एंड देयर इज अ बेनिफिट. चलो गुड जॉब. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये RYB क्या है? व्हाट इज RYB?
तो मैंने आंसर दिया बिकॉज ओनली वन क्वेश्चन आज दिस क्वेश्चन, इसको हमने 1 2 3 एक्स वाई जेड ऐसा भी नाम दे सकते थे ना, वी आर गिवन द नेम लाइक 1 2 3 XYZ, तो इसको नाम क्यों दिया होगा? ओके, एनी गेस? रेड येलो ब्लू। हाँ, रेड येलो ब्लू, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? व्हाई टू आइडेंटिफाई द फेस बाय कलर? उस पे 1 2 3 लिखा होता, XYZ लिखा होता तो भी चलता था ना। Colors are easy to watch. हाँ, you can identify colors more easily instead of reading. Do you agree with this logic? आप कलर से आइडेंटिफाई करना बहुत इजीली हो जाएगा ना, instead of you actually reading phase 1, phase 2, phase 3. Do you agree with this logic? Yes or no? चलो ठीक है, ये भी हो गया। तो why these colors RYB? Are these primary colors? कभी पढ़ा है, साइंस में Yes, पढ़ा sir. है? रेड येलो ब्लू। ओके, हैव यू सीन वन वेरी वाइब्रेंट कलर? एक कलर आता है अर्थिंग के लिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग कलर यूज किया जाता है, एक वाइब्रेंट कलर होता है, दैट इज ग्रीन। हाँ, दैट टू वो थोड़ा सा आंखों के लिए बहुत इजीली आप लोग उसको आइडेंटिफाई करते हो, तो इसके लिए भी लॉजिक रहता है। एंड न्यूट्रल इज ऑलवेज ब्लैक, न्यूट्रल इज ऑलवेज ब्लैक एंड ग्रीन इज फॉर व्हाट? अर्थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, I will carry this discussion after break also because we are very close to break. तो कुछ इसमें से points बचे। My next question is that कि why we need, and I want everyone to participate। बच्चों, ये आपका oral का preparation है, this is the preparation for oral, और आपका पूरा subject easy होगा अगर आप participate करते हो। तो why I am using 3-phase motor for this? मेरे पास सिंगल फेज मोटर का भी ऑप्शन था ना, और आपका लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। Why I'm not using single phase motor for lift and water pump? क्या लॉजिक होगा? Heavy appliances, sir. हेवी अप्लायंसेस, कोई भी मोटर हो, सिंगल फेज मोटर हो, 3 फेज मोटर हो, डीसी मोटर हो, सब में क्या है? देयर इज आउटपुट एज अ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूंगा। व्हाट डिफिकल्टी आई विल फेस अगर मैंने लिफ्ट के लिए सिंगल फेज मोटर लगाया, तो व्हाट डिफिकल्टी आई विल फेस? मैं सिंगल फेज मोटर से भी लिफ्ट को चला सकता हूं, तो व्हाट विल बी द डिफिकल्टी? चलो, मैंने आंसर लिखा है, पढ़ के बताओ क्या होगा साइज ऑफ द मोटर? विल इट बी वेरी ह्यूज? डू एग्री विद दिस? यस और नो? तो अगर मैंने लिफ्ट के लिए, वाटर पंप के लिए सिंगल फेज मोटर यूज किया, मैं कर सकता हूं, बट द साइज ऑफ द मोटर विल बी वेरी बल्की, मेंटेनेंस विल बी वेरी लार्ज, कॉस्ट विल बी वेरी मोर। तो दैट इज द रीजन आई टू मेक अ प्रॉपर चॉइस व्हेन आई एम सिलेक्टिंग द मोटर। तो 3 फेज मोटर फॉर वाटर पंप, लिफ्ट, कन्वेयर्स, single phase motor if pumps are smaller. So in that way I have to make a choice, I have to make a choice. So everyone on the same page? चलो, अब question is that कि what about this particular users? अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। I have got 3 AC at my home. मेरे घर पे 3 AC है और 2 गीजर्स है। Can I turn on them simultaneously? Everyone should participate in this discussion. I'm a single phase user. I'm a single phase user. I'm a single phase user. And I got 3 AC. 2 बेडरूम में, एक हॉल में, और 2 गीजर 2 बेडरूम के लिए। तो can I turn all these them simultaneously or there will be any problem? Yeah. And what is that problem? Trip होगा, sir. ट्रिप होगा। देखो बच्चों कि ये वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है, आपने सुने हैं ये वर्ड्स। Why this will trip? Load आएगा. वेदांत? हाँ, लोड नहीं कर पाएगा। लोड नहीं कर पाएगा। गुड जॉब। ये कैसे डिसाइड करोगे आप? देखो बच्चों, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। राइट नाउ यू आर समहाउ मैनेजिंग विथ अस एज अ पेरेंट। हमने जो आपको 1 BHK 2 BHK दिया है। ओके, तो टुमारो व्हेन यू विल गेट अ जॉब इन मेटा, यूट्यूब, इन एनवीडिया, व्हाट विल बी योर सैलरीज? 10 lakhs, 20 lakhs per month. So definitely you will buy a very huge apartment, 5 BHK, 6 BHK. अच्छा लगा ना सुन के? 10 BHK. But hope preferably you will be having only one spouse.
तो बच्चों व्हेन यू शिफ्ट टू अ बिग अपार्टमेंट, व्हाट इज द चैलेंज? क्या चैलेंज होता है एक बड़े फ्लैट में रहने का? चैलेंज क्या होगा फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू? यू कैन नॉट टर्न ऑन मल्टीपल एसीज एंड मल्टीपल गीजर्स एट ए टाइम। डू एग्री विद दिस? ओके, अब ये लिमिट कैसे डिसाइड होगा? तो देयर इज वन एमसीबी, एक एमसीबी होता है। ये कहां पे होता है? आपके घर पे होता है और आपके सोसाइटी में होता है। जनरली इसका रेटिंग होता है 32 एम्पियर। ऑल ऑफ यू नो दिस? कितने लोग को मालूम है? रेज योर हैंड। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके घर का अर्थिंग, आपके घर के एमसीबीज आपको मालूम चाहिए। गुड जॉब अथर्व, अर्षदा। ओके, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? हाउ टू कैलकुलेट दिस? चलो मैं बताता हूं। फॉर पावर फॉर्मूला इज वी आई कॉस फाई। फॉर पावर फॉर्मूला इज वी आई कॉस फाई। P stand for active power. Okay. Now I want to know कि मेरा जो वोल्टेज है, व्हाट इज द वोल्टेज? 230 वोल्ट। cos phi इज द पावर फैक्टर। अभी मैं इसको 1 या 0.8 ले सकता हूं, तो आई एम जस्ट इग्नोरिंग दिस राइट नाउ। ओके, व्हाट अबाउट पावर? ये पावर कहां से पता चलेगा? जनरली इट इज 4.5 किलोवाट। बाय चांस कोई बताएगा ये फिगर आपको कौन से बिल पे मिलेगा? ये आपका बिल आता है मंथली, आपके घर पे आता है। ये फिगर आपको कौन से बिल पे देखने मिलेगा? गैस के बिल पे देखने मिलेगा, या अमेजोन के बिल पे देखने मिलेगा, मिंत्रा के बिल पे देखने मिलेगा? कहां पे मिलेगा ये देखने के लिए? चलो कम ऑन फास्ट। ऑल ऑफ यू गेट इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ। तो वहां से आपको पता चलेगा कि आपका सैंक्शन लोड कितना है। हाउ मच इज द सैंक्शन लोड एंड हाउ मच इट इज? 4.5 किलोवाट अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा कम ज्यादा होता है इफ यू आर सिंगल फेज यूजर। इफ यू आर अ सिंगल फेज यूजर, now can I say 4.5 kilowatt is 445 itna watt? What is your voltage? 230. What is your current? Can anyone tell me what maximum current you are allowed to draw with the sanction load? Quickly, fast. We are just away from 11 minutes away from our break. I know that you are tired. जल्दी उठे हो आप, ताजुद के लिए उठे हो, ब्रह्म के लिए उठे हो। Okay, what is the current? हाँ, कितना? 19.5. 19.5. I think, is it 19.5 or it is 24.5? Someone please verify. Someone please verify. मैं भी करता हूं। चलो जल्दी जल्दी सब लोग कैलकुलेशन करो, ब्रेक के लिए जाना है। इज इट 19.5? तो बता दो। नाइनटीन पॉइंट फाइव। चलो 19. चलो, गुड जॉब। अब बच्चों मुझे बताओ, विद द सेफ्टी फैक्टर हमने कितना किया? इसको हमने किया 32 एम्पियर। 32 एम्पियर। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कितना 20 एम्पियर 25 एम्पियर हम मैक्सिमम ड्रॉ करते हैं, तो सेफ्टी के लिए 32 किया। बच्चों बट अगर मेरा अपार्टमेंट बड़ा है, इफ माय अपार्टमेंट इज बिग, तो क्या सोल्यूशन होगा बच्चों? कैन आई मेक दिस 4.5 किलोवाट एज 12.5 किलोवाट, 18 किलोवाट? तो अगर मैंने ये किया तो आई कैन ड्रॉ मोर करंट, आई कैन इंक्रीज द साइज ऑफ माई एमसीबी टू 63 एम्पियर एंड आई कैन टर्न ऑन माई मल्टीपल एसीज। इज प्रॉब्लम सॉल्व? अगर मुझे मल्टीपल एसीज मल्टीपल गीजर्स ऑन करने, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? Get higher sanction load from the supply company. Supply company normally gives you 4.5 kilowatt. चेक करके बताना ब्रेक में मुझे कि आपका सैंक्शन लोड कितना है। तो आफ्टर ब्रेक आई वांट एवरीवन टू पुट इन देयर चैट बॉक्स कि व्हाट इज द सैंक्शन लोड ऑफ देम, और वो कहां से मिलेगा आपको? आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल से। अगर आपको ज्यादा लोड साइमल्टेनियसली ऑन करना है, तो आपको 12.5 और 18 किलोवाट सैंक्शन करना पड़ेगा। बट देयर इज अ कैच। व्हाट इज द कैच? सप्लाई कंपनी विल नॉट सप्लाई दिस विथ सिंगल फेज। तो आपको सप्लाई कंपनी 3 फेज सप्लाई देगी, विच इज मोर कॉस्टली, एंड इंटरनली यू हैव टू डिवाइड। एक फेज 2 रूम के लिए, सेकंड फेज 2 रूम के लिए, एंड थर्ड फेज 2 रूम के लिए। मतलब दो यू आर डोमेस्टिक यूजर, कुछ घर पे 3 फेज सप्लाई आता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट 3 फेज?
ultimately they are going to consume single phase power only, but with that three phase they can turn on more ACs, more geysers. Am I clear about this concept? If you say yes, I will go ahead. चलो बच्चों, now what about this RYB? ये RYB क्या है? It is a phase. और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? Okay, I will tell you one story. एक स्टोरी बताता हूं. Quickly, everyone pay attention to this story. Suppose आपके सोसाइटी में देयर इज सम मेंटेनेंस वर्क ऑफ दिस लिफ्ट. इस लिफ्ट का कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहा है एंड यू आर अपॉइंटेड टू लुक फॉर दैट मेंटेनेंस वर्क. का बच्चों ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है. आपकी सोसाइटी में कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहा है. इस वाटर पंप का चल रहा है सपोज फॉर एग्जांपल, और आपको उसको अपॉइंट किया गया है कि आपका काम क्या है, उस पंप का मोटर निकालकर उस पंप को और उस मोटर को मेंटेनेंस के लिए भेजना. और आपका काम था इन वायर्स को निकालना, एक 4 वायर को निकालना, और जब मेंटेनेंस से पंप वापस आएगा तो वापस वायर को जोड़ के उस मोटर को और पंप को शुरू करना. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड व्हाट इज योर जॉब एज ए इंजीनियर इन योर सोसाइटी, कि आपके सोसाइटी का वाटर पंप और मोटर मेंटेनेंस के लिए जा रहा है एंड बिकॉज यू आर एस्पायरिंग इंजीनियर, आपको एक छोटा सा काम दिया गया कि उस वायर को निकाल के रखना, और जब वापस आएगा पंप और मोटर उस वायर को वापस जोड़ना. बट आपने एक गलती कर दिया एज यूजुअल. व्हेन दैट केम बैक, जब वो पंप और मोटर वापस आया तो यू मेड दिस मिस्टेक. कैन एनीवन मेक आउट व्हाट मिस्टेक यू डिड? मैंने मिस्टेक लिखा है. आपने एक वायर गलत कनेक्ट किया. हैव यू अंडरस्टूड? सिनेरियो सबको पता चला? नाउ एवरीवन इज गैदर्ड टू सी हाउ द वाटर पंप एंड हाउ द मोटर इज गोइंग टू स्टार्ट. आपके घर वाले भी आएंगे बिकॉज 2 लाख 2.5 लाख का पे किया है, सोचेंगे कि मेरा बच्चा कैसे काम कर रहा है. ये 840 वाली भी आएगी. हु इज स्टेइंग इन 840? योर गर्लफ्रेंड. शी वांट टू से कि मेरा बंदा कैसे वायरिंग करता है. ओके, डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड? क्या होगा ऐसा किया तो? सब लोग देख रहे हैं, आपकी सोसाइटी वाले भी देख रहे हैं, आंटी अंकल जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, और स्पेशली शी इज लुकिंग एट यू विथ लॉट ऑफ लव अफेक्शन कि मेरा बंदा कितना इंटेलिजेंट है, वाटर पंप को निकाला, मोटर को निकाला, वायरिंग निकाला, और आपने एक छोटा सा गलती किया. आपको क्या लगा, क्या फर्क पड़ता है? एंड यू स्टार्टेड द वाटर पंप एंड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड इंक्लूडिंग यू. आपको तो लगा कि आपने कुछ नया इन्वेंशन किया. डू यू नो व्हाट हैपेंड और व्हाट विल हैपन? वाटर पंप हैज नॉट pumping the water from ground to overhead tank. It has started taking water from overhead tank to ground tank. कोई बताएगा क्या हुआ? आपने पंप को वैक्यूम क्लीनर बनाया. कोई बताएगा what happened? मैं लिखता हूं यहां पे what happened. वो छोड़ने की जगह अंदर ले रहा है. हाँ सर. गुड. हाँ देखो मैंने आंसर लिखा है. देखो मैंने आंसर लिखा है. देखो कितना इंटरेस्टिंग है एक वर्ड ऑफ इंजीनियरिंग. सी हाउ इंटरेस्टिंग दिस वर्ड इज. मैंने आंसर लिखा है. कोई मुझे बताएगा व्हाट हैपेंड? विथ RYB phase sequence, the motor which was running in clockwise direction, it has started running in which direction? Counter clockwise. ओके, क्या होगा? पंप खराब हो जाएगा. यस. और क्या होगा? घर वाले बोलेंगे क्या कुछ नहीं हो सकता है बंदे का. ओके, बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस. ये बोलेगी 840 वाली कि ये बच्चा, ये बंदा 3 वायर नहीं जोड़ सकता तो लाइफ का वायरिंग कैसे करेगा. ओके, तो व्हाट इज बॉटम लाइन? तो इसको टेक्निकली कैसे समझेंगे बच्चों? विथ RYB phase sequence, if motor is running clockwise, with YRB phase sequence, motor will run counterclockwise. So phase sequence play a very important role in electrical engineering, and that is the reason the sequence is not written 1 2 3 XYZ ABC. Color codes are used.
हम सिंगल फेज यूजर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमको बी फेज से मिल रहा है, वाई फेज से मिल रहा है, बट जब एक थ्री फेज मोटर रन होता है उसके लिए बराबर वायर जाना जरूरी है. हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? Anyone, any doubt? Because just 2-3 minutes are left and we are going for break. Exactly break of 20 minutes. Forum is open now. Forum is open now for 2-3 minutes. If no doubts, I will go for break because I want to use each and every minute for its best possible use. Exactly after 20 minutes, we are going to meet, but still 2 minutes are left. If anyone, any doubt in any of the concept, no doubt after break also I will take doubt, but it is always good to ask doubt when it is very live. किसी को कुछ डाउट है? If no, please raise, give me thumbs up and we are good to go for break. तो वो चिलिया क्या था, चिलिया? हाँ, चिलिया कुछ तो लिखा था ना आपने? नेक्स्ट कहाँ पे स्लाइड, लिखा? नेक्स्ट स्लाइड आगे, नेक्स्ट। हम्म. हाँ, वहाँ पे चिलिया करके कुछ लिखा ना, 8 करोड़, 800 करोड़ के आगे। ए नहीं, ए लिखा है बिलियन. हाँ, बिलियन होते हैं, बिलियन, 8 बिलियन। चलो बच्चों, thank you very much for being such a good audience for such a long time, because morning 2 hours at to 8 o'clock is a great job. Wish you all the best. Exactly after 20 minutes we'll meet, so have some good high protein breakfast and we'll come back again. चलो, thank you. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का स्वागत है धारावाहिक BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. ओके, तो whatever your feedback, keep giving your positive feedback. Host has stopped your video. Host, can I know why you stopped my video? But let it be. Devraj, am I audible still now? Mihir? Yes, sir. Sir, you have right to share the video. हाँ, मैं किया. Thank you, Subodh. Harshada, thank you. I want many more videos to be on. मिहिर, देवरेश, सब लोग वीडियो ऑन करो, थोड़ा एक अच्छा माहौल बनेगा. बच्चों, till now I'm also happy the way you are interacting, because the success of online teaching lies with both teacher as well as student. How much teacher is able to motivate the student, and then students how they interact. I'll keep motivating you to turn on your videos, to turn on your mic, keep talking. Chalo. Now till now we talked about all these things. एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ बच्चों में क्विकली. मुझे इसका मीनिंग बताना. What is the meaning of this diagram? Okay, this diagram is a very significant diagram. कोई इसका मतलब बताएगा? What is the meaning of this diagram? ये बच्चों आपके प्रैक्टिकल में बहुत काम में आएगा आपको ये डायग्राम. चलो, एटलीस्ट रीड द डायग्राम. This is what AI is given to you. So how you will interpret this? आंसर आपके सामने है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करो. Anyone? If you are comfortable, you can put it in chat box. हाँ बोलो. मे बी फर्स्ट वाले में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन सेकंड वाले में नहीं हो रहा है फ्लो. इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है. ओके, ओके. Anyone else? सर सेकेंड वाले में पोलैरिटी नहीं, बिकॉज वो साइकिल चेंज होते रहता है. Good job.
तो बच्चों whenever you're working with DC, you have to be careful कि you have to connect your ammeters, voltmeters with correct polarity. In AC, you don't have to worry. Is it very interesting and important point? Okay. अब मैं कुछ ड्रॉ करता हूं. This is a capacitor. This is also capacitor. This is the electrolyte capacitor. These are paper, ceramic capacitor. Can you make out some difference? Can you make out some difference? क्या difference आप make out कर सकते हो? Polarity. Polarity means जब भी आप capacitor के साथ काम करोगे, certain capacitors will come with some polarity, but certain capacitors like paper, ceramic capacitor, you don't have to worry. They can be connected either way. So बच्चों, definitely I will meet you offline at least once. Later you can decide the frequency, and I will let you know all these very important things that I know little bit, because I got some basic knowledge of electricity. I worked with Maharashtra State Electricity for 1 year, and I worked in textile industry as a maintenance engineer, electrical engineer. So I got some real experience of all these motors, generators, transformers, and I can share that with you, which will help you a lot, which can help you a lot. चलो, अगर आपको ये concept पता चला है, तो मुझे बताओ कि if there is a mistake in RYB sequence, a three-phase motor will rotate in anti-clockwise direction, opposite direction. Everyone agree with this? सब लोग agree करते? हाँ या ना बोलो, चलो. At least now, हाँ. अहमद थोड़ा सा भी स्पीकर पे भी बोलोगे तो थोड़ा साउंड अच्छा रहेगा. चलो, गुड गुड गुड. अब मुझे बताओ, थ्री फेज में तो पता चला कि फेज सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ध्यान से सुनना, घर पे आप सीलिंग फैन या टेबल फैन के लिए 2 पिन के साथ उसको ऑन कर रहे हो. आपने 2 पिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कनेक्ट किया, रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट किया, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या डायरेक्शन ऑफ मोटर में? फर्स्ट लेट मी नो, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? पड़ेगा. तो सुल्तान इज सेइंग कि आपने अगर गलत डायरेक्शन में पिन डाला, 2 पिन, तो शायद मोटर अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा. सुल्तान, एम आई राइट? दिस इज योर प्रेडिक्शन बच्चा? अदर्स प्लीज लेट मी नो कि जो आपका फैन घूम रहा है, आपने 2 पिन उल्टे डायरेक्शन में डाला. 2 पिन इज लाइक योर मोबाइल फोन का चार्जर. चेंज ऑफ डायरेक्शन विल हैपन. अहमद इज सेइंग, सुल्तान इज आल्सो सेइंग चेंज ऑफ डायरेक्शन. अदर्स प्लीज. ओके, मीर, योर ओपिनियन? वो जो Sir, no मोटर है, change. नो चेंज विल हैपन. बच्चों, अभी भी आंसर मैंने बता दिया. अगर सिंगल फेज है तो यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव टू वरी. गुड गुड. ए बच्चों, ये सब ऑब्जर्वेशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, बिकॉज इससे हमारा अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा, मैथ्स भी बेटर होगा. ओके, नाउ वन लास्ट कंसेप्ट इन दिस कैटेगरी. ओके, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था. क्विकली आई विल ड्रॉ दैट डायग्राम. Quickly I will draw that diagram. I'm going to draw the socket that is available at your house. आपके घर में जो सॉकेट है, okay, just let me know, is this socket available at your house? आपने बोला हाँ, तो आप मुझे बताओ, is it a 5-phase supply or 3-phase supply? चलो, one answer is 3-phase. चलो, put your answers quickly. This is the socket at your house. तो सुल्तान is saying 3. 3-phase. Ahmed is saying 3. I want all 20, 28, 30 answers, including Subodh sir. Atharva, okay. Answer is single phase. देखो कितना. ओके, चलो. ना हाउ कम 5 सॉकेट है, 5 होल्स है. ओके, अब मुझे बताओ, दिस इज फेज, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज कॉपी पेस्ट, फेज एंड न्यूट्रल. अंडरस्टूड व्हाई इट इज सिंगल फेज? इट हैज ओनली वन फेज एंड इट हैज गॉट न्यूट्रल. एवरीवन एग्री विद दिस? तो इट इज नॉट अ 3-phase सप्लाई. आपके घर पे 3-phase सप्लाई नहीं आता unless and until you are specially asked MACB like 12.5 kilowatt, 18 kilowatt. Okay, now what is the use of this? तो बच्चों,
सपोज दिस इज द अप्लायंस यू आर यूजिंग, आपके घर में का कोई अप्लायंस है, ओके कोई बताएगा अप्लायंस पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? कॉइल, जिसको हम सप्लाई कनेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल इट मे बी सम इलेक्ट्रिकल आयन, इट मे बी गीजर, इट मे बी बल्ब, इट मे बी टीवी, सबके अंदर इंडक्टर इज अ लोड. ओके, नाउ हाउ इट इज कनेक्टेड? ये कनेक्ट कैसे होता है? थ्रू केबल. आप उसको ऐसे कनेक्ट करते हो. ओके बच्चों, लेट्स ड्रॉ योर, आपका डायग्राम ड्रॉ करते हैं. आई विल ड्रॉ योर डायग्राम in the best possible way. I will try to draw your diagram. Very happy, बहुत बड़ा हॉलीडे मिला है. Enjoying your holidays. तो this will be your last holiday of your life. इसके बाद आपको बहुत छोटे छोटे हॉलीडेज मिलेंगे. Okay, everyone agree with this? You are operating this appliance. You are operating this appliance. Now my question to you, if, ध्यान से सुनना, if there is a this problem, क्या हुआ है? Phase has got connected to the body of the appliance. कोई बताएगा what will happen? सोच के बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी. What will happen? Can you please Will you repeat? get shock? Will you get shock? Yes or no? Aryan, अगर ऐसा हुआ, phase came in contact with the appliance body, तो आपको शॉक लगेगा? Yes or no? Yes, Aryan is saying yes. Yes. हर्षदा, your opinion बच्चा? शॉक लगेगा? हाँ, current will Okay. flow through it. Current will flow through your body. Any protection available here? कोई प्रोटेक्शन आप दे सकते हो? कोटिंग, रबर कोटिंग, क्या होता है प्रोटेक्शन? रबर और कोटिंग. clean करने का. रबर कोटिंग इज वन थिंग, बट हर्षदा ने भी एक चीज बात बोली, उसने बोला अर्थिंग. अब मुझे बताओ, करंट के पास दो ऑप्शन है. व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल नाउ? वन, इट कैन फ्लो थ्रू योर बॉडी और इट कैन गो टू अर्थ. विच पाथ करंट विल टेक? विच पाथ करंट विल टेक? विल इट फ्लो थ्रू अर्थ और विल इट फ्लो थ्रू, कहां से फ्लो होगा? अर्थ में. तो कोई बताएगा, कैन आई कॉल दिस टर्मिनल एज अर्थिंग? ओके, तो मैंने आपको फेज बताया, मैंने आपको न्यूट्रल बताया. हैव आई सक्सेसफुली टोल्ड यू व्हाट इज अर्थिंग? कैन यू टेल दिस टू एग्जामिनर, व्हाट इज द रोल ऑफ अर्थिंग? आपके लैंग्वेज में बताओ व्हाट इज अर्थिंग. यू ट्राई. It prevents the user from getting shocks or वेरी गुड, वेरी गुड. ये बच्चे सबने करना चाहिए. तो ये आपका अगर अर्थ फॉल्ट होता है, अगर आपका अर्थ फॉल्ट होता है, तो करंट विल नॉट फ्लो थ्रू योर बॉडी. करंट कहां से फ्लो होगा? इट विल फ्लो थ्रू अर्थ, because it is a zero resistance path. It is a zero resistance path, and because of this, entire fault current will flow through that particular earthing. Okay, everyone on the same page? Raise your hand. Everyone on the same page? Chalo. One very important question. One very important question. Have you observed this terminal? Is it big in size? And is this terminal longer yes. for the pin top? दो चीजें ऑब्जर्व करनी है आपको. इसका जो होल होता है एंड जो पिन टॉप का साइज होता है वो बड़ा होता है, और जो पिन होता है, हैव यू ऑब्जर्व दैट इट इज अ लॉन्गर? डू यू एग्री विद दिस टू ऑब्जर्वेशंस? Yes, sir. We'll try to answer this. Why the size of this particular earthing hole and the conductor should be more? बच्चों जल्दी जल्दी आंसर करना है, नहीं तो मैं आंसर कर दूंगा. मैंने आंसर कर दिया आपके पहले. चलो अब आंसर बताओ. हैव आई आंसर्ड दिस? अरे बताओ आंसर. व्हाट इज आर?
चलो फॉर्मूला पढ़ो. व्हाट इज आर? इज इट रो एल अपॉन ए? व्हाट इज रो? कांस्टेंट. व्हाट इज एल? लेंथ. व्हाट इज ए? व्हाट इज एरिया ए? क्रॉस सेक्शनल एरिया. अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा रखा तो क्या होगा? वेरी गुड, रेजिस्टेंस वेरी कम गुड. तनिषा, तनिषा हैज. बच्चों एटलीस्ट जब मैं लिखूंगा तो उसको डिकोड करके जल्दी बताना. डू यू एग्री विद दिस लॉजिक? डू यू एग्री विद दिस लॉजिक? यस और नो? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो वी आंसर दिस. कोई बताएगा व्हाई दिस टर्मिनल इज लॉन्गर? ऐसे होते हैं देखो, ए बड़ा होता है और ए छोटा होता है, फेज वाला. व्हाई दिस? ये जो पिन टॉप में जो होता है ना, ऐसा क्यों होता है? ये जो अर्थिंग का जो पिन है वो थोड़ा लंबा होता है. व्हाट शुड बी लॉजिक? एनीवन चलो क्विकली क्विकली. सर व्हेन यू पुट अ 3 पिन. वेरी गुड पूर्वी, गुड So that the जॉब. excess current must flow to the नहीं, एक्सेस earthing. करंट तो जाएगा, बट पूर्वी का आंसर देखो. कैन एवरीवन सी द आंसर ऑफ पूर्वी? पूर्वी अ चॉकलेट फ्रॉम मी. So whenever I will meet you, some prizes I will be giving to you. पूर्वी ग्रेट जॉब. बच्चों जब 3 पिन डालोगे तो सबसे पहले कौन सा कनेक्शन होना चाहिए? वेरी गुड. चलो बच्चों बताओ. आर यू डू यू एग्री विद पूर्वी? बच्चों जब 3 पिन करोगे, डालोगे तो पहला कनेक्शन कौन सा होगा? It will be earth, so that if any problem is there you will be saved. Good job बच्चों. ओके चलो इसी लाइन पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं. ऑल ऑफ यू सीन द लैपटॉप चार्जर? आपने आपके लैपटॉप का चार्जर देखा? उस पे एक यहाँ पे ऐसा बड़ा सा लीड होता है. हैव यू ऑब्जर्व दैट? यस यस. सर क्या रीजन होगा? मतलब ऐसा एक सिंपल सा तो वायर जाना चाहिए ना चार्जर का. इट शुड बी अ सिंपल वायर गोइंग एज अ इनपुट टू योर लैपटॉप. तो बीच में एक तंबू जैसा कुछ तो दिया होता है. क्या रीजन होगा? वो अडेप्टर होते हैं. एडॉप्टर नहीं बच्चा, एडॉप्टर नहीं. सी 3 पिन, बाद में एडॉप्टर. एडॉप्टर के बाद में बीच में ही एक ऐसा बड़ा सा कुछ तंबू ऐसा आता है. सुचलेलं असतं ना सगळ्यांना मराठी येतं मुलांना? हाँ येतं येतं. येतं ना बघा. हाँ, वन थिंग, लैंग्वेज शुड नॉट बी बैरियर बिटवीन यू एंड मी. हिंदी मराठी इंग्लिश कुछ भी चलेगा. तो बच्चे तंबू होता है, नहीं होता है इंडक्टर. तो बेसिकली इंडक्टर एक्ट एज अ फिल्टर. तो जो भी नॉइज है that is prevented by that. तो इस टाइप ऑफ क्यूरियोसिटी शुड बी देयर. चलो बच्चों, तो हैव यू अंडरस्टूड अर्थिंग परफेक्टली? सर डाउट है. हाँ बोलो बच्चों, गो अहेड. चलो अगर वो इंडक्टर हाँ बोलो, गो अहेड. आई एम लिसनिंग यू. सर अगर इंडक्टर वो लैपटॉप के चार्जर को होता है तो मोबाइल के चार्जर को क्यों नहीं होता? मोबाइल वी डोंट नीड दैट टाइप ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. वी आर ओके विद हमारा जो चार्जर इटसेल्फ इज सफिशिएंट. बट जो आपका जो इसका सप्लाई है लैपटॉप का, इसका तो इट इज मोर टुवर्ड्स द एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई. और अपनी जो नॉर्मल चार्जर्स होते हैं वो सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं. एंड स्विच मोड पावर सप्लाई में देयर इज अ नॉइज. जहां पे स्विचिंग स्पीड आता है वहां पे नॉइज आता है. दैट इज द रीजन वी डोंट नीड दैट टाइप ऑफ थिंग इन द मोबाइल फोन. ओके सर. समझ? हाँ, गुड गुड अंडरस्टैंड. देखो बच्चा, देखो ये ऑब्जर्वेशन है कि इमीडिएटली सर ने बोला लैपटॉप में तो होता है, इसमें नहीं होता. तो ही ऑब्जर्व दैट. ओके गुड गुड, वेरी गुड. एंड समटाइम बच्चों आई फ्रैंकली टेल यू, कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है कि जो मुझे इमीडिएटली ना आए. I will research and I will let you know. But for that, you have to be very vigilant. You should ask multiple doubts, difficult doubts to teachers. Teachers should be always be on toes. अरे मैं क्लास में जाऊंगा तो ये बच्चे बहुत डाउट पूछते हैं, तो I have to prepare a lot. That type of student you should be. चलो. Now, we talked about phase, neutral, polarity, everything we talked about. Okay. Now, one thing I want to discuss कि I want to talk about your mobile phone charge. Abba, again, I want lot of answers, some videos on, some audio, some chats. बच्चों ये आपका फोन है.
16 Pro Max, 25 Ultra, anything or in that Vivo. Okay. तो बच्चों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैटरी. Okay. Is it a chargeable battery or it is a simple battery? ये बैटरी चार्जेबल होती है? Yes, sir. Yes, चार्जेबल होती है. Okay. What is the voltage of this battery? 5 volts. 5 volts. तो मुझे बाद में आप सब लोग डीएम चैट बॉक्स में डालोगे आपका वोल्टेज कितना है. इट में बी बिटवीन 3.4 टू 4.5 वोल्ट आपको बताना है मुझे. और उसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम चाहिए. कोई बताएगा व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस 4000 mAh? ये ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? ज्यादा. ज्यादा. वेरी गुड. एनीथिंग एक्सेस वी ऑलवेज लाइक. ओके. तो बच्चों व्हाट इज यूज ऑफ ज्यादा आर्यन? तो विल इट लास्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन? इज इट दैट सिंपल? Yes. तो अगर 8000 mAh का बैटरी है, मेरे पास 4000 mAh का बैटरी है, तो अगर मुझे हर दिन चार्ज करना है तो तुम्हारे पास 8000 mAh है तो यू हैव टू चार्ज ट्वाइस मतलब 2 दिन में एक ही बार चार्ज करना पड़ेगा. तो व्हाई नॉट वी गो ऑन इंक्रीजिंग दिस? व्हाई कांट वी मेक इट 10,000, 20,000, 30,000? साइज, रिस्क, ऑल दीज थिंग्स विल कम इन पिक्चर. ओके. इसके बारे में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे. गुड. फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, हीटिंग. गुड जॉब, गुड जॉब. अब मुझे इस बैटरी को चार्ज करना है, तो आपके मोबाइल फोन चार्जर का आउटपुट यहां पे आता है. ध्यान से देखना. व्हाट शुड बी इट्स वोल्टेज? 3.5 और 4.5. ओके. कोई बताएगा व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ दिस वोल्टेज? ये वोल्टेज का नेचर कैसा होना चाहिए? व्हाट शुड बी नेचर ऑफ दिस वोल्टेज? शुड इट बी AC. परफेक्ट डीसी? शुड इट बी परफेक्ट डीसी? शुड इट बी प्योर डीसी? ये प्योर डीसी होना चाहिए, इम्प्योर डीसी चलेगा? क्विकली. शुड इट बी प्योर डीसी या थोड़ा सा पल्सेशन चलेगा? इज इट ओके इफ दिस इज लाइक दिस? Pure DC, sir. हाँ, Pure DC. it should be pure DC. Why? Because it will affect the battery life. It will affect the battery health. तो आपको pure DC चाहिए. अब everyone quickly let me know. This is your socket. ये आपका socket है. जानबूझ के मैं 3 पिन ही ड्रॉ कर रहा हूं. Okay. What voltage you are getting from your socket? 230 What voltage you are getting? जब तक इंडिया में हो तब तक कितना वोल्टेज मिलेगा? Okay. Now tell me what should be the first part? आपके चार्जर में सबसे पहले क्या होना चाहिए? What should be the first thing in your charger which can reduce this voltage to a lower level? Because this Step level down is very low. transformer. Very good. देखो बच्चों, देखो हमारा पूरा सिलेबस आज रिवाइज होने वाला है. And you are going to feel so confident that you will be always be curious कि अभी हमने ये पढ़ेंगे, अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, अभी हम सिंगल फेस पढ़ेंगे, हम 3 फेस पढ़ेंगे, हम बीजेटी पढ़ेंगे. तो बच्चों इसका सिंबल क्या होगा? प्राइमरी should be more number of turns and secondary should be less number of turns. Am I right? Okay. Step down transformer. तो क्या करेगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर? Will it convert AC to DC or will it convert AC to AC? आंसर किया हमने, चलो बताओ. Will it convert AC to DC or AC to AC? AC to DC. Into AC. AC to AC. AC to AC. Maybe from higher voltage to lower voltage and lower voltage to higher voltage. Am I right? चलो बताओ जल्दी जल्दी. Am I right? Yes. ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच. तो बच्चों अप्रोक्सीमेटली मैं कुछ वोल्टेज लेता हूं यहाँ पे. तो इट इज ऑल्सो एसी. इट इज ऑल्सो एसी बट कम वाला. फॉर एग्जाम्पल कितना? 5-6 वोल्ट एसी. वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है. व्हाट शुड बी फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस 5 वोल्ट और 6 वोल्ट? स्टेप डाउन है तो वोल्ट फ्रीक्वेंसी कम होगा या सेम रहेगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हाँ,
स्टेप डाउन है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगा या बढ़ेगा? ठीक है, मैं आंसर लिखता हूं, frequency will remain same. Frequency will remain same. The output will be 5 volt or 6 volt AC. तो बच्चों क्विकली बताओ, now I want to convert this AC to DC. तो कौन सा सर्किट है? वेरी गुड. So what I will have here, rectifier. Now what are the options in rectifier? आपके पास क्या चॉइस है? हाफ वेव, जिसमें एक ही डायोड लगता है. फुल वेव, you have got two options. One is center tap type. किसी को गलती से याद है व्हाट इज अनदर फुल वेव? ब्रिज. इसमें 2 डायोड होते हैं और इसमें 4 डायोड होते हैं. दिस इज द बेस्ट पॉसिबल रेक्टिफायर वी हैव. हाफ वेव में सिर्फ एक डायोड से काम चल जाता है, बट आउटपुट इज वेरी पुअर. ओके, नाउ टेल मी, इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट क्या होगा? इज इट एसी और इज इट डीसी? डीसी. डीसी होगा. नाउ क्वेश्चन इज इट प्योर डीसी और इज इट पल्सेटिंग डीसी? सबको आंसर आना चाहिए, गलती हुआ चलेगा, बट सब लोग को आंसर करना है. बताओ मुझे. चलो, ये रेक्टिफायर का आउटपुट विल पल्सेटिंग डीसी. चलो मैं ड्रॉ करता हूं. वेरी गुड, गुड जॉब. तो दिस इज pulsating DC. What I mean by pulsating DC? DC having unwanted AC component. So this is impure DC. But मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए pure DC. मुझे चाहिए pure DC. Now I want to remove this unwanted AC component, ripple. तो बच्चों मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ये ब्लॉक डिस्कस करने के पहले इसमें से मुझे कुछ निकालना है इस सर्किट में. I want to remove something. What I want to remove? Some unwanted AC component. So I will give one simple example जिससे आप इमेजिन कर सकते हो. बच्चे, आपकी मॉम जब सुबह चाय बनाती है तो चाय में टी पार्टिकल्स होते हैं और लिक्विड टी होता है. शी वॉन्ट ओनली लिक्विड टी. तो व्हाट शी यूज? मराठी सांगितलं तरी चालेल, मराठी सांगितलं तरी चालेल. चहा मला फिल्टर करायचा आहे. काय काय वापरते मम्मी? काय वापरते? चाळण वापरते. चाळणं वापरते, चाळणं. तो कैन आई कॉल दैट एज फिल्टर? देखो कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है. कैन आई कॉल दैट एज फिल्टर? तो आपके लैंग्वेज में बताओ, व्हाट फिल्टर विल डू? व्हाट फिल्टर विल डू? क्या ब्लॉक करेगा और क्या पास करेगा? रिमूव अनवांटेड. क्या अनवांटेड है इसमें? एसी अनवांटेड है या डीसी अनवांटेड है? AC. देखो बच्चों कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है. मतलब ये दिस इज ऑल अराउंड अस. तो व्हाट फिल्टर विल डू? इट विल ब्लॉक एसी एंड पास डीसी. तो बच्चों यहां पे हम यूज करेंगे सम वेरी इंटरेस्टिंग कंपोनेंट, बट उसका कुछ लॉजिक हम लोग डेवलप करेंगे बाद में. उसका कुछ लॉजिक डेवलप करेंगे हम बाद में. सी व्हाट आई एम गोइंग टू यूज. आई एम गोइंग टू यूज हियर इंडक्टर एंड व्हाट आई एम गोइंग टू यूज कैपेसिटर. और इसके हम मल्टीपल स्टेप यूज कर सकते हैं. दिस इज इनपुट ऑफ द फिल्टर, दिस इज आउटपुट ऑफ द फिल्टर. बट किसी ने ऑब्जर्व किया, मैंने कुछ भेदभाव किया है इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ? कोई भेदभाव बताएगा? मैंने इंडक्टर को कैसे कनेक्ट किया और कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट किया है? हमें कनेक्टेड बोथ इन सीरीज, बोथ इन पैरेलल, या एक सीरीज में एक पैरेलल में है? एक सीरीज में है और एक पैरेलल में है. तो दीज आर एग्जैक्टली टू अपोजिट बिहेवियर. देखो कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है. मतलब कनेक्ट करते वक्त भी हमको कितना सारा कुछ आ सकता है. हाउ मच वेरी इजीली वी कैन अंडरस्टैंड. सी व्हाट आई कैन डू. अब मुझे बताओ, नेचुरली बताओ, ये कनेक्शन तो बराबर है, तो इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होगा? ये किसको पास करेगा और किसको ब्लॉक करेगा? सोच के बताओ. अकॉर्डिंग टू कनेक्शन, बाद में हम उसको मैथमेटिक्स से डेवलप करेंगे. इंडक्टर किसको पास करेगा और किसको ब्लॉक करेगा? इंडक्टर विल पास डीसी एंड विल ब्लॉक एसी. कोई बताएगा थोड़ा सा लॉजिक यूज करके, कैपेसिटर किसको ब्लॉक करेगा और किसको पास करेगा? डीसी ब्लॉक करेगा, एसी पास करेगा.
हाँ, बट एसी पास करने का फायदा क्या? एसी चला जाएगा ग्राउंड की तरफ। कहां पे चला जाएगा? ग्राउंड की तरफ। एंड मोर प्योर डीसी विल बी अवेलेबल। हैव यू अंडरस्टूड दिस वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट? मतलब इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स आर फिल्टरिंग कंपोनेंट, बट इनको अलग अलग यूज किया ना हमने। इंडक्टर क्या करता है? डीसी पास करेगा, एसी ब्लॉक करेगा, इसके लिए सीरीज में। और कैपेसिटर क्या करता है? डीसी को ब्लॉक करता है, बोलता है ग्राउंड की तरफ मत जाओ। बट एसी को बोलेगा यू गो टू द ग्राउंड। हैव यू अंडरस्टूड दिस? हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो बताओ, एस नो एस नो। यस सर। गुड गुड गुड। यस। चलो इसके बारे में और बात करेंगे, नहीं समझा तो बच्चों पूछो। और इसका सब मैथमेटिक्स है, ये कैसे होता है। बट स्टिल आई एम लिटिल बिट वरीड कि मेरा वोल्टेज फ्लक्चुएट हो सकता है, मेरा वोल्टेज फ्लक्चुएट हो सकता है। तो आई नीड समथिंग विच कैन स्टेबलाइज दिस। स्टेबलाइज करना चाहिए वोल्टेज को। बाई चांस कोई बताएगा ये क्या ड्रॉ किया मैंने? डायोड। वेरी गुड। एंड मुझे चाहिए स्टेबलाइज्ड वोल्टेज। तो कैन आई से दिस इज अ वोल्टेज रेगुलेटर? बच्चों अगर ये आपको समझा तो remaining part of BW you understood. There are two parts. One is the electrical part, another is the electronics part. Have you understood this diagram? Have you understood this diagram? Chalo, tell me yes, no, yes, no. Chalo. Yes. 10 minutes time, only 10 minutes time, huh, bachcho? Only 10 minutes time. I want you to draw this beautiful diagram, most important diagram. And you can do wonders in your exams and in your oral examination. Chalo, start. ये बच्चों आज का सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें एसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज है, रेक्टिफायर है, फिल्टर है। Intentionally, I'll keep mum for 5 minutes, and I hope you have got lot of color pens with you and noting down each and everything very carefully. I'm trying my best to ensure okay. Meantime, I want everyone to put in the chat box your mobile phone voltage and image. I want around 26 answers. Bachcho, I'm not just boasting you. After a long time, I'm feeling very happy in my first lecture itself. The way you interacted, the way you are answering, fabulous, Bachcho. Thank you very much. Because you people are our energy. At Vidyalankar, if you are happy, we are very happy. करेक्ट आर्यन, ये सब कुछ आपके मोबाइल चार्जर के अंदर होता है, इतना कुछ होता है, थोड़ा और भी होता है। दिस इज व्हाट इनसाइड योर मोबाइल चार्जर। अंडरस्टूड आर्यन? मीन्स सी बच्चों कि आप जब मोबाइल फोन यूज करोगे ना तो एक्चुअली यू आर रिवाइजिंग BW एवरी डे।
Okay, I'll suggest some projects also. So even if you're from computer IT, data structure, DSA, all these things, definitely you like to do some projects for your benefit by using Arduino, Raspberry Pi. But have you heard about Raspberry Pi? Anyone? Good. Okay, but these are some very important things. Arduinos, Raspberry Pis. These are small microprocessor, microcontrollers. Even Raspberry Pi is a small computer. अगर आपके पास Raspberry Pi होगा, तो you can connect a keyboard and mouse and you can start working as a computer. अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझना है कंप्यूटर का, तो अपना Raspberry Pi लाओ. उसका Raspberry ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. You can play with that operating system and you can understand your Windows operating system. You can understand all these operating systems very easily. Okay, it's 11 o'clock. We are going to have some very more interesting discussion after 2-3 minutes. सर MAH मतलब क्या? Milliampere hour. Milliampere hour. 4000 mAh मतलब अगर if you are drawing 4000 milliampere from a battery, it will last for 1 hour. बच्चों देखो, ये कुछ लोग को मालूम होगा, but I'm repeating this. Everyone agree with this? What is the meaning of 4000 mAh? What is the meaning of 4000 mAh? If I'm drawing 4000 milliampere from this type of battery, how much it will last? तो बच्चा अगर मैंने 2000 milliampere ड्रॉ किया, तो बैटरी कितने देर withstand करेगा? If I'm only drawing half of the capacity, do I agree with this calculation? और बच्चों मैं मोबाइल को यूज कर रहा हूं, आई एम only drawing 400 milliampere. So this battery will last for how many hours? Very good. मतलब अगर आप बहुत सारे एप्लीकेशंस रन नहीं कर रहे हो बैटरी पे, बहुत लाउड म्यूजिक नहीं बजा रहे हो मोबाइल फोन पे, डेफिनेटली इट विल रन फॉर मोर ड्यूरेशन. ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम एमएच अवेलेबल इन द मार्केट नाउ? सबसे तगड़ा फोन जिसका बैटरी सबसे बड़ा है? चलो, क्या एक्चुअली मैंने एक वर्क बताया था. मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. कोई बताएगा कि 16 प्रो मैक्स एंड 25 अल्ट्रा इसकी बैटरी में क्या फर्क है? तो आई वांट एटलीस्ट फ्यू इन द कमेंट बॉक्स. व्हाट इज एमएच एंड वोल्टेज ऑफ 16 प्रो मैक्स एंड व्हाट इज वोल्टेज एंड एमएच ऑफ 25 अल्ट्रा? आई वांट फ्यू आंसर्स इन द चैट बॉक्स. So we are going to compare Apple and Samsung, the most debated thing in the world. Anyone please do it for me. So we are going to have some very interesting discussion. iPhone, very good. Tanisha, thank you very much for such a quick reply.
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which battery will last more if I'm having equal load, equal application running on 25 Ultra and iPhone, एंड उसका लॉजिक चाहिए मुझे, कौन सा बैटरी ज्यादा लास्ट करेगा, आईफोन का या सैमसंग का? बेसिक लॉजिक टेल्स अस सैमसंग का ना, बट आंसर इज दे इक्वली लास्ट. सुल्तान, थैंक यू. सुल्तान इज अ बिग फैन ऑफ आईफोन, तो आंसर केम वेरी क्विकली. थैंक यू सुल्तान. ऐसा क्यों बच्चों? एक्चुअली जिसका एमएच ज्यादा है इट शुड लास्ट मोर. एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है इस वर्ड में, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम. Apple has got more beautiful hardware software integration compared to Samsung. Do you agree with this? थोड़ा सा एज है, both are good. प्रोसेसर का है very good, but there is also one concept known as hardware software integration. कि how intelligently your software is using the battery, and that is the reason people who know hardware, they are successful software engineer. देखो ये बड़ा स्टेटमेंट मैं कर रहा हूं. People who know hardware, they are more successful software engineer. Do you agree with this? जिनको पता है हार्डवेयर क्या है, they are more successful, they are more successful software engineers. Good job बच्चों. I'm very happy the way you're putting your answers. बच्चों, can I go ahead? If you're finished, just give me confirmation. बच्चों, I almost touch each and every topic of our syllabus. Devraj, thank you बच्चा. I also want to hear from everyone. एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो बच्चा. बीएमएस के बारे में बता सकते हो बस, बीएमएस के हाँ, बारे में? इट इज अ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम. ये अलग से 2 साल का आईआईटी मद्रास का कोर्स है. ओके. इट इज अ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक कोर्स. हाँ. ओके, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? आपको कहाँ पे जॉब लग सकता है इफ यू आर गुड बीएमएस इंजीनियर? ये मशीन मशीन टेस्ला, टेस्ला. ऑटोमेटिक कार्स. इज इट अ ड्रीम कंपनी, वन ऑफ द ड्रीम कंपनी? अभी तक मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम लिया, अभी तक मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम लिया. और बच्चों, जिसने ट्रिलियनर बना दिया, इलॉन मस्क को, व्हाट वाज द आईपीओ नेम? कौन सा आईपीओ था इलॉन मस्क का जिसने उसको ट्रिलियनर बना दिया? चलो पढ़ के बताओ. हर्षिल, हर्षिल भाई, व्हाट इज द नेम? मतलब जो उसने इलॉन मस्क को इतना 1 ट्रिलियनर बना दिया. SpaceX. Very good. It was the biggest, one of the biggest IPO. चलो बच्चों, तो बच्चों ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा एंड मारुति, दे आर द फ्लैग होल्डर फॉर इंडियन इलेक्ट्रिकल ईवी के लिए. तो बच्चों ये सब चीजें, मतलब अगर आपको बैटरी मैनेजमेंट आता है एंड इफ यू आर गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू मे एंड अप इन टेस्ला. तो ऐसा मत समझना कि आपको सिर्फ C++ डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए. Whatever you are going to learn in your entire engineering, it is going to help you a lot. बहुत आपको हेल्प करने वाला है. चलो, someone please let me know. Can I go ahead quickly? Yes, sir. चलो. Okay, now write down concept of open circuit and short circuit. Everyone note down this title. Everyone note down this title. Okay. बच्चों, अगर through practical I'm able to teach you some concept, you will remember that for a long time. So everyone sit back.
I'm going to draw the scenario at your house. आपके घर का scenario मैं draw कर रहा हूं. This is a single phase supply. What is the voltage in India? 230 volt 50 hertz. 230 volt 50 hertz. A very important question. आपके घर में जो लोड है, बल्ब, ट्यूबलाइट, fan, geyser, washing machine, they are connected in series or they are connected in parallel. They are connected in series or they are connected in parallel. Parallel. Why? Parallel. Why? Good, very good answer and very quick. Why not in series? Sir, if one gets damaged, पूरा बंद होगा. दिस इज द फर्स्ट आंसर, इसको याद रखना. दैट इज द करेक्ट आंसर, बट इसका और एक बेटर आंसर मैं दूंगा. वी आर कनेक्टिंग ऑल लोड इन पैरेलल. अभी का हमारा आंसर है कि सर एक लोड बंद हो जाएगा तो सब बंद हो जाएगा, बट इसका एक बेटर आंसर हम लोग ढूंढेंगे बाद में. ओके, तो आई एम गोइंग टू कनेक्ट योर बल्ब. voltage. Same voltage, very good. Now this is your bulb, this is your tube light, and so on. Fan, geyser. Everyone agree with this diagram? Somewhere you have got socket also. यहाँ पे आप आपका चार्जर वगैरह इलेक्ट्रिकल आयन यहाँ पे लगा सकते हो. Everyone agree with this diagram? Okay. And now we are going to learn concept of open circuit and short circuit. बच्चों, if this bulb gets fused, if this bulb gets fused, what will happen? क्या होगा? Will any damage will happen, or only that bulb will stop working? only that one will stop. Good. तो अगर ऐसा हुआ तो this bulb is fused, this bulb will stop working. What current will flow through this? Do you agree? Do you agree with this diagram? Bulb got fused, so bulb will stop working. Can I say here open circuit has created? तो बच्चों, अगर बाय मिस्टेक ओपन सर्किट होता है आपके हाथ से सर्किट में, इट विल नॉट क्रिएट एनी डैमेज. व्हाट विल बी करंट, बट व्हाट विल बी वोल्टेज? यहाँ पे अभी भी वोल्टेज कितना है? व्हाट इज वोल्टेज हियर? इज इट 230? डू यू एग्री विद दिस कि इन केस ऑफ ओपन सर्किट करंट विल बी जीरो, बट ओपन सर्किट वोल्टेज विल एग्जिस्ट? अगर आपने वहां पे हाथ लगाया तो आपको शॉक लगेगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट. ये आप लोग करोगे नहीं. दिस यू विल नॉट डू इन रियल लाइफ. बच्चों, एट योर होम और इन योर कॉलेज यू गॉट सॉकेट इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने सॉकेट होता है, तो देयर विल बी टेम्पटेशन ऑफ डूइंग दिस. कोई बताएगा व्हाट इज टेम्पटेशन? आपके हाथ में वायर होता है, सामने सॉकेट होता है, और करने के लिए कुछ नहीं होता है. अगर किसी ने ये किया तो विल इट क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड विल इट लीड टू सम एक्सीडेंट? योर ओपिनियन. दिस इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट सर्किट. Yes. Open circuit is not a problem. It will just that particular load will stop working. But अगर short circuit किया या हुआ तो will it create a problem? And what is the problem? Yes. It will catch fire. Fire. It will catch fire. Good job. Actually आपने मेरा final answer पहले दे दिया. Now let's calculate why it will catch fire. बच्चों, all these resistances are in parallel. Okay. Now what is R parallel 0? Is it R into 0 divided by R plus 0? Is it 0? So what is total resistance? Is total resistance 0? So what will be current? V upon R total. So theoretically what will be current? Theoretically what will be current? Practically huge amount of current will flow. Huge amount of current will flow. Do you agree with this? So can I say ISC, maximum ISC will flow?
बट वेट अ मिनट, कोई बताएगा व्हाट इज VSC? ये 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना होगा जहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ है? इट इज 0. ओके, so have you understood concept of open circuit and short circuit? तो बच्चों, what is the takeaway? What is the takeaway? This is the takeaway. Note down this, and if any doubt will take, I will take. आप पहले इसको नोट कर लो. If there is a doubt, I will take. But be very sure about these two quantity. In case of open circuit, current is 0, but open circuit voltage exists. In case of short circuit, voltage will be 0, but maximum short circuit current will flow. Okay, 3-4 minutes time. Note down this. I'm expecting lot of question because ये जो फायर है, ये फायर कोई बताएगा क्या मुझे? फेज, न्यूट्रल. which I'm going to put some interesting quizzes in front of you afterwards. तो आज का जो भी लेक्चर है उसको रिवाइज करके आना while coming next time. No doubt we are going to start with some numericals, mesh, nodal, but I'm damn sure with this very strong concept you are going to do a lot. Sir, can you please explain short circuit once again? Okay, बच्चा, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जैसे ही किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जीरो रेजिस्टेंस आता है तो एंटायर करंट फ्लोज थ्रू दैट जीरो रेजिस्टेंस. टेंडेंसी क्या होती है? करंट की टेंडेंसी क्या होती है? व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द करंट? कहां से फ्लो करेगा वो? Zero sir. हाँ, मतलब एंटायर करंट विल फ्लो थ्रू दिस. रीजन क्या है? अब रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? इज टोटल रेजिस्टेंस जीरो? एनीथिंग पैरेलल विद जीरो? बिकॉज किसी के थ्रू करंट नहीं फ्लो करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए पाथ होगा करंट के लिए. और बच्चों, अगर जीरो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है, थ्योरेटिकली कितना होगा वो? इन्फिनिटी. ओके, आई टॉक मोर अबाउट दिस. मैं इसको और 2-3 बार बाद में मेन सिलेबस में रिपीट करूंगा. ओके, 1 or 2 minutes I will wait and I will go for next concept. और बच्चों, ये तीनों सब्जेक्ट्स को वैकेशन बैच में खत्म कर देना. You will be having an advantage. You will do wonders in your engineering because you have started with a vacation batch of Vidyalankar. आपको आपका पूरा इंजीनियरिंग, यू विल बी थैंकफुल बिकॉज यू स्टार्टेड विथ अ वैकेशन बैच ऑफ विद्यालंकार. तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बर्डन 0 था बिकॉज आपने तीनों सब्जेक्ट्स खत्म कर दिए इन द वैकेशन बैच इटसेल्फ. तो आपको सिर्फ बाकी के 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबली एंटरिंग इन द वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग. और जैसे मैंने बोला है कि आपको मल्टीटास्किंग करना है, आपको बहुत सारे नए AI टूल्स पढ़ने हैं, विल हेल्प यू इन दैट डायरेक्शन. और उसके लिए आपके पास बहुत सारा टाइम काफी चाहिए, बचा हुआ चाहिए. एंड द ओनली वे इज टू फिनिश द एंटायर सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर विथ अस. थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करो, थोड़ा मेहनत करो. आई नो दैट इट विल बी लिटिल बिट चैलेंजिंग, टैक्सिंग, बट थोड़ा सा करोगे तो बच्चों, आपका जो ड्रीम जॉब है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, आपको जो भी करना है लाइफ में, बेस्ट पॉसिबल यू कैन डू. ओके, कैन आई गो अहेड बच्चों? गिव मी थम्स अप. चलो, नाउ वन लास्ट थिंग. तो
Okay. My mic was disconnected. Am I audible now? Sarthak? Sanvi? Chalo. Thank you, bacha. Bacho, what to do under this situation? Because of this excessive current, wire will heat up and will damage. तो इसके लिए कुछ solution है क्या? इसके लिए कुछ solution है क्या? And what is the name of that solution? क्या होता है solution? कोई बताएगा? What is this? चलो पढ़ो पढ़ो जल्दी जल्दी. क्या लिखा है मैंने? Fuse. तो बच्चों अगर if this happens, what will happen? Do you agree with this? ऐसा होगा? It will break the circuit. It will break the circuit. So is it important there should be a proper fuse? Yeah. MCB. MCB stand for miniature circuit breaker plus ELCB, earth leakage circuit breaker, to avoid shock, to sense earth leakage. Okay, so I'll talk more about this later during the syllabus. Okay, anyone, any doubt? Can I go ahead? Can I go ahead? Can you repeat, sir? Can I go ahead? Or you want to repeat me some concept like MCB, ELCB? Concept, sir. हाँ, तो बच्चों MCB stand for miniature circuit breaker and ELCB stand for earth leakage circuit breaker. But these are mechanical protection. It will take more time to clear. ऐसा क्यों बच्चों? Compared to fuse, MCB and ELCB का जो response time है थोड़ा ज्यादा होगा. Because fuse is a metal which will melt very quickly. तो fuse का response time बहुत fast होगा. But compared to that, MCB and ELCB will take more time. But हर एक का अपना अपना use होगा. Okay. Am I clear बच्चा? Yes, sir. Okay बच्चा. अभी everyone now make a note. Series connection of resistance and voltage division rule. बच्चों अभी भी आपने एक क्वेश्चन का आंसर किया था and everyone has given the correct answer कि at our place our all load is connected in parallel not in series. कॉमन आंसर was कि सर कोई एक लोड बंद होगा तो सब बंद होगा. बट एक आंसर बहुत अच्छा था कि पैरेलल में होगा तो सबको वोल्टेज सेम मिलेगा एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर. तो बच्चों if I got two resistances in series R1 and R2, so actually right now we are dealing with our first topic DC circuit. This is voltage V, this is I, this is V1, this is V2. Okay, all of you know in series what is the formula we use? R1 plus R2. Do you agree with this? And it is applicable for any number of resistances in series. And then I can write V1 equal to total voltage into the same resistance across which I am finding the voltage divided by all series connected resistances. Divided by all series connected resistances. And V2 equal to V into R2 divided by R1 plus R2, and here the same resistance across which I'm finding the voltage. This is called as voltage division rule. Voltage division rule tells us that
how in series voltage will get divided. Okay, we can prove this particular rule. We can prove this particular rule. Okay, am I clear about this rule? Numerator में क्या है? Same resistance across which I am finding the voltage. Okay, anyone, any doubt? चलो क्विकली, बिकॉज एक मुंबई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. ओम, काशवी, एनीवन? चलो नोट डाउन, चलो इसको नोट करो. तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो देखते हैं कि इसे रूल बनाने का कुछ फायदा है क्या, या ओनली फॉर रिमेम्बरिंग. बिकॉज someone told yesterday only to me or to our teachers gathering, our trustee, कि remember does not make us innovative. ठीक है, शुरू में थोड़ी चीजें हमको समझनी चाहिए, रिमेम्बर करनी चाहिए, बट अल्टीमेटली वी शुड एबल टू अप्लाई, क्रिएट समथिंग. So let's see this VDR help us to reduce something, apply somewhere. और लिखता हूं. Sir, what is the full form of VDR? Voltage division rule. बच्चों, there is some interesting pop-up. Your email ID register with Vidyalankar, password your register mobile number with Vidyalankar for any query related to Studies app. You have got one interesting app, Studies. So बच्चों, for a very long duration, you will be getting this, all these updates. You got our phone number also. Only thing we are expecting from you, थोड़ा discipline, 4 hours of focus. Okay, can I go ahead? चलो क्विकली अपन ने, सर ये आपने रूल बनाया, इसका यूज क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है. तो देयर वाज a very interesting question from MU. MU stand for Mumbai University. Multiple times this question was asked. I will write down that question. See how interesting thing becomes. और बच्चों, advantage of you people attending this lectures की diagrams of mechanics, BEE will develop in front of you. आपको जब आप एक रेडीमेड डायग्राम देखते हो ना, तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है. तो आई विल रीड द डायग्राम फॉर यू. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm. Are these all resistances connected in series? Yes or no? Yes. Yes. Simple rule होता है, if same current flows through the resistance, then they are in series, and if same voltage exists across them, then they are in parallel. Now, this is the voltage applied. See what I'm saying? This is the voltage applied to the circuit, and this is the voltage measured across t ohm and 4 ohm. Have you understood this? But moment you see the entire diagram in front of you, आपको पता नहीं चलता कि कौन सा वोल्टेज अप्लाइड है एंड कौन सा वोल्टेज मेजर्ड है. तो V is the voltage applied and V1 and V2 are the voltages measured across 3 and 4. And question asked was find V1 upon V and find V2 upon V. अब देखो ध्यान से. Method 1. Method 1. See what I will do. I will find current. What is current?
Is it V by 1 plus 2 plus 3 plus 4? Do you agree with this? Is it V by 10? Is it V by 10? तो मैंने पहले करंट फाइंड किया. What I did, I found first current. Then I will write Ohm's law. V1 equal to 3 into I. What is I? V upon 10. What is V1 upon V? Is it 3 upon 10? Similarly, V2 equal to 4 into I. So it is 4 into V upon 10. So what is V2 upon V? 4 upon 10. Have you understood this simple solution? बच्चों ये एमई में पूछा था. Okay, but there is a catch in this. When you are in engineering, your life should be after eating Mentos. Mentos खाने के बाद जैसा आपको ऐड में दिखता है, life should be easy. अगर आपको इंजीनियरिंग आता है तो see what I can do. Method 2, by using voltage division rule. देखो मैंने क्या बोला? By using voltage division rule, can I directly say V1 voltage across one of the series connected resistance, equal to total voltage into the same resistance across which I'm finding voltage V1 divided by sum of all series connected resistances. तो मेरा आंसर क्या बन गया? V1 upon V equal to 3 upon 10. एक स्टेप में आंसर आ गया. मेरा जो लेंदी प्रोसीजर था पूरा got reduced in a single step. चलो कोई बताएगा VDR for second voltage V2? आप बताओ. What is V2 equal to? V total voltage applied into the same resistance across which I'm finding the voltage V2 divided by sum of all the resistances. So what is V2 upon V? तो बच्चों, hope after having Mentos जिंदगी you will be very comfortable. Have you understood use of VDR? And basically this is a derivation of VDR. कि VDR आया कहां से? Good job. चलो note down. This is our first numerical from your Mumbai University. मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे. तो इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स फास्ट, कॉन्फिडेंटली. मल्टीपल क्वेश्चंस में से प्रॉपर क्वेश्चन चूज करना. हैव अ गुड एसजीपीए, सीजीपीए. 10 सीजीपीए का टारगेट रखना. अ गुड सीजीपीए is required for tier 1, tier 2, tier 1 placement companies. Okay, please feel free to interact in any language you are comfortable. No doubt our official language will be English. हिंदी में बोला तो भी चलेगा. मुन्ना भाई वाला हिंदी बोले तो वाला. मराठी यायलाच पाहिजे असं राज ठाकरे साहेबांनी निक्षून सांगितलंय. तर होप सगळ्यांना मराठी येतं. मला पण मराठी येतं, चांगलं येतं. So please feel free to communicate with your teachers, ask your doubts. तो बच्चों, this will also answer you the question कि why we connect load in parallel, because if you connect load in series, even if all loads are on,
it will not get proper voltage will get divided, and with that less voltage your load will not work. We are left with 25 minutes. We'll try to use this left time for best possible use case. Once you finish, give me thumbs up. I'm expecting everyone to give me thumbs up. चलो बच्चों, अगले रूल का नाम आप बताओगे मुझे. ये रूल का नाम क्या था? सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज डिवीजन रूल. कोई बताएगा इसका अपोजिट रूल क्या हो सकता है? क्विकली, व्हाट कैन बी इट्स अपोजिट नेम? Voltage multiplication. multiplication. Parallel connection of resistance and voltage multiplication rule. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, गुड गुड गुड. और बच्चे जो क्विकली होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरीथिंग वी हैव टू डू वेरी फास्ट. गुड जॉब. पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ तक तो हम लोग बराबर है. बट थोड़ा सा आगे चेंज है. इट इज नॉट वोल्टेज डिवीजन रूल. क्या होगा नाम? Current division. गुड. दिस इज द वे ऑफ लर्निंग. Okay, now I got voltage, I got two resistances R1, R2, I got a current, total current I, it is divided in, okay, now all of you know 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. बच्चों देखो, मैं कुछ भी एज्यूम नहीं कर रहा हूं कि आपको सब आता है. आई एम पुटिंग ईच एंड एवरीथिंग बैक, कि मैं कुछ भी एज्यूम नहीं कर रहा हूं कि फिजिक्स में आपने ये पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा होगा. तो फाइनली व्हाट इज आर? 1 upon R equal to R1 R2 R2 plus R1. Am I right? So what is R? R1 R2 divided by R1 plus R2. Multiplication in the numerator and addition here. Okay. Now again directly I'm going to write I1 equal to current in one of the parallel branch equal to total current into opposite branch resistance. Can you see the difference? VDR में क्या था? Same resistance divided by sum of only two parallel resistance. यहाँ पे not all parallel resistance. It is strictly applicable for two resistances in parallel. And what is I2 equal to? I into, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? What will be in the numerator? I to R1. R1 Very good. Opposite branch resistance R1 plus R2. और इस रूल को हम क्या नाम देंगे? करंट डिवीजन रूल. चलो नोट डाउन. What is limitation of current division rule compared to voltage division rule? Only two resistance. Very good. Next question. If there are more than two resistances, what you should do? अगर दो से ज्यादा रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? First you have to reduce that into two resistances according to your convenience, and then you can apply the rule. ये सब ऑब्जर्वेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है. आई एम वेरी हैप्पी. चैतन्य समझते करे? चैतन्य साहब, गुड. ओनली थम्स अप. थोडं बोलत जा, थोडं थोडं. ओके सर. सुट्टीत गेला तर नाही मामाच्या गावी? नाही, जायला नाही भेटलं. नाही भेटलं. कुठलं गाव रे तुझं? सातारा. सातारा. सातारमध्ये कुठं? खटाव. खटाव ना. माझं कराड ऐकलं का? हो हो. ऐकलं ना. सातारा माझा आजोळ. अच्छा. जायचं का? कासला जायचं का? का महाबळेश्वरला? चला महाबळेश्वरला. का ठोसेकरचा धबधबा? का सज्जनगड?
Okay, these are some beautiful places at Satara. Satara Ghat is very famous for its beauty. आपली फुलं कधी येतात रे कासची? माहिती आहे का कासला खूप छान छान फुलं येतात? पण नो आयडिया. नो आयडिया. ते येतात सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये पाऊस संपला की. ओके. देवरेश समझ में आ रहा है बच्चा? एंड प्लीज फील फ्री टू गिव योर पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी बातें बोलो. पॉजिटिव फीडबैक मतलब और क्या बेटर हो सकता है, हम ऑनलाइन मोड में है तो हम ज्यादा एंगेजिंग कैसा कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू मोर. दे आर ऑलवेज देयर टू अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टीज. और बच्चों प्लीज 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 टेबल कुर्सी पे बैठो, लिखो. Just don't lying on the bed will not help us. Okay, बच्चों can I go ahead? Okay, recording of today's lecture for revision purpose will be available on Studies app. Harshita, thank you बच्चा. अथर्व, चलो बच्चों जायचं का पुढं? थोडंसं 20 मिनिटं राहिलेत आता फक्त. हो सर. जायचं 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 चला आता 20 मिनिटाचं आहे, पण खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण आता सगळे न्यूमेरिकलच्या कन्सेप्ट चालू होणार आहे. ओके, आय नो दॅट की देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू स्टडी, बट इट इज ओनली एट द इनिशियल स्टेज. और एक बार आपका अच्छा हो गया, once you are good in all these basic, hope you have noted each and everything. I tried my best to relate with the real life. तो आपका जो आगे का जर्नी है ये सब्जेक्ट में ना आगे जाकर थेरम्स है, कैलकुलेशंस है, बट इफ योर बेसिक्स आर क्लियर ना, आप सिर्फ ओरली भी कुछ कुछ कर सकते हो. ओके, नाउ आई वांट टू नो concept of ammeter. Okay, बच्चों ammeter is a current source or current measuring device? मेजरिंग डिवाइस. वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे गलती होता है. एमीटर इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस. ओके, नाउ सोच के बताओ, इज इट कनेक्टेड इन, इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज और इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड व्हाई? Series. हाँ बच्चा, इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल Series. बट सीरीज. एनीवन वांट टू से पैरेलल? ओके, मेरा क्वेश्चन है, अगर गलती से आपने एमीटर पैरेलल में कनेक्ट किया तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा क्या कॉलेज को? सी है वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्वेश्चन कि अगर आप प्रैक्टिकल में आपने एमीटर पैरेलल में कनेक्ट किया गलती से तो थोड़ा बहुत पैसा भरना पड़ेगा. क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? हाँ विल सर. ट्राई टू फाइंड डिफरेंट करंट. ओके, तनीषा इज सेइंग सीरीज. अब देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि अगर आपने एमीटर गलत कनेक्ट किया, सीरीज की जगह पैरेलल कनेक्ट किया, तो शायद आपको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा, वो एमीटर का कॉस्ट. ओके, व्हाट शुड बी आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर? 0. वेरी गुड. Practically as low as possible. Practically as low as possible. Okay, now डायरेक्टली एक एग्जांपल लेंगे. तो ये सब आपको प्रैक्टिकल में काम आने वाला है. 5 ओम, 5 ओम एमीटर, 5 वोल्ट. चलो क्विकली बताओ, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? इज ऑल डेटा सफिशिएंट? ओके, 2 minutes time. Can anyone find internal resistance of ammeter? Can anyone find internal resistance of ammeter? सर वो 0.9 एम्पियर है ना. हाँ,
कैन एनीवन फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर? 2 मिनट का टाइम है, गलती हुआ चलेगा बच्चों। आई एम पुटिंग सम टाइम क्वेश्चन डायरेक्टली यू टू यू। थोड़ा सा चेंज करता हूं डेटा। मैं थोड़ा और सिंपल करता हूं। वोल्टेज चेंज करता हूं तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा और इजी हो जाएगा। मैं इसको 10 वोल्ट करता हूं। ओके, एटलीस्ट गिव मी आइडिया कैसे होगा। तो कैन आई फाइंड टोटल करंट? कैन आई फाइंड टोटल करंट? व्हाट इज द फॉर्मूला? इज इट करेक्ट? Okay, everyone agree with this formula? I total equal to V total divided by R total. Okay, now I'll substitute. What is I total given in this case? Okay, what is 10 divided by 0.9? What is 10 divided by 0.9? 11.11. I'm doing a little bit quickly. 1.11. Is it a very bad ammeter? ये बहुत खराब एमीटर है। I'm saying this is a very bad ammeter. चलो quickly. इंटरनेशनल और कम चाहिए। Resistance is very large. Resistance is very large. Note down this. पहले सब लोग नोट कर लो। तो इसमें से 2-3 कंसेप्ट पता चला कि एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। ओम्स लॉ यूज किया, टोटल करंट फाइंड किया, इक्वेट किया उसको। 0.9 was already given total current and we R 1.111. बच्चों ये थोड़ा सा अच्छे से करना बच्चों, बिकॉज इसमें मैं कुछ कंक्लूड करने वाला हूं। we're almost end of the lecture बच्चों। I know that you're tired. Okay, this was the first example. Just tell me the answer for second example and आपका लिखने का काम खत्म, then मेरा conclusion, I will conclude today's lecture. कोई आंसर बताएगा विदाउट कैलकुलेशन? व्हाट विल बी आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इन सेकंड केस? 0.1. वेरी गुड बच्चों, ये आना चाहिए जल्दी जल्दी। ओके, ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस आंसर? व्हिच एमीटर इज बेटर? सेकंड वन। व्हाई? इंटरनेशनल इज लो। हाँ ठीक है, वो तो है, उसका फायदा क्या? आपका आंसर यहाँ पे देखो। व्हाट शुड बी एक्चुअल आंसर? एक्चुअली एमीटर ने कितना दिखाना चाहिए था? 100. ओके, वो कितना दिखा रहा है? सेकंड वन इज मोर एक्यूरेट। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो बच्चों दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम। आप जब एआई को प्रॉम्प्ट देते हो, जब दोगे तो आपको एआई ऐसे अलग अलग आंसर देगा। डू यू नो आजकल एआई दो दो आंसर देता है ऐसा, और बोलता है तुमको जो अच्छा लगेगा। Yes. ओके, तो लाइफ भी ऐसा आपको दो दो आंसर देगी, तो आपको एक चूज करना है। एक क्लास में गर्लफ्रेंड मिलेगी, एक कॉलेज में मिलेगी, मामाची पोरगी ती वेगळीच आहे, कुठली चूज करणार तिघातली? थोडासा अवघड प्रश्न असतो. ओके, so this is how you are supposed to look at your numericals, your derivations. Okay, have you understood? Okay, can I go ahead for my last concept? Yes, sir. Okay, so our last concept, तो क्या लिखा था कि ideal internal resistance of ammeter should be zero and practically as low as possible. इसको भी लिखना है यहाँ पे बच्चों, practically as low as possible. चलो क्विकली इसको लिखना बच्चों, practically as low as possible. एंड बच्चों डोंट मिस अ सिंगल मिनट ऑफ एनी ऑफ द सेशंस। तो आपका बहुत सारा बर्डन, जनरली एट द एंड ऑफ द सेशंस वी टेंड टू लीव अर्ली, तो थोड़ा सा पुश करना अपने आप को, बिकॉज वी हैव टू डू सम वंडरफुल थिंग्स इन आवर लाइफ. We have got lot of good things for you. Okay, now today's last concept. Okay, student confused between these two. अच्छा, दोनों में क्या फर्क है? What is this and what is this? दोनों वोल्टेज है ना? नहीं, this is a voltage source. This is a voltage source. And what is voltmeter? It is a voltage measuring device. It is a voltage measuring device. Okay. Now tell me, voltmeter should be connected in series or in parallel? अब थोड़ा लॉजिक इजी हो गया. Parallel. Parallel. Good. So it should be connected in parallel. Good job बच्चों. It should be connected in parallel. अब सबसे important question, what should be its ideal resistance and why? Infinite. Very good. Ideal internal resistance should be infinite. Practically क्या लिखोगे? As users. Maximum As possible. तो अगर आप, because you cannot design anything ideal, you cannot design anything ideal, तो practically आप क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसा वोल्टमीटर बनाना पड़ेगा. Okay, now why? ऐसा क्यों? Suppose I have 10 ohms, 10 ohms, and this is 20 volt. Okay, what current is flowing? What current is flowing? Current कितना flow होगा? Is it 1 ampere? Yes or no? चलो बच्चों quickly. Yes, 1 ampere. Only 8 minutes left. What current will flow? 1 ampere. 1 ampere. Suppose I want to measure this voltage. If I connect a voltmeter here, if I connect a voltmeter here, okay, और इसका resistance है 2K. Okay, actually what should be reading across, what should be voltage across this 10 ohm? What is the current? Current कितना है? What is the current? Is it 1 ampere? So what voltage it should show? 10 volt. कोई बताएगा अगर मैंने एक प्रैक्टिकल वोल्टमीटर कनेक्ट किया तो विल इट शो मी 10 वोल्ट एंड व्हाई? सोच के बताना. ये मुझे 10 वोल्ट दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा? नहीं. नहीं दिखाएगा ना.
Will it show me less or will it show me more? A very important question. Huh? Will it show me less or will it show me more? Okay, we'll answer this shortly. अब बच्चों होगा क्या? करंट इधर भी फ्लो होगा ना? Okay. Now this 10 ohm will not be 10 ohm. This 10 ohm will be 10 parallel 2000 ohms. Do you agree with me? And because of this, this exact reading will not be indicated. But अगर a resistance infinite होगा, तो it will show me exact 10 volt. Note down this. ये अगर 5k होगा, 10k होगा, 100k होगा, तो my reading will come very close to 10 volt. और अगर ये infinite होगा, तो this reading will be exactly 10 volt. This reading will be exactly 10 volt. Some calculation part I'm excluding at this stage because we are almost at the last stage. Next time I will show you some more calculation for voltmeter. Just note down this and I will conclude today's lecture. Okay, life is all about making some good choices. So बच्चों always have good books to choose. कहाँ से पढ़ रहे हो? No doubt, at least for these 3 subjects, you don't have to worry much. But for other subjects, when you go in college, तो initially सबसे पहले आपको आपका study source decide करना है कि कौन से book से पढ़ोगे. Avoid learning from ChatGPT and YouTube. एक अच्छे टेक्स्ट बुक से पढ़ना हमेशा या अच्छे टीचर से पढ़ना. Okay, there are some good NPTEL courses from IIT. और बच्चों जैसा मैंने बोला था कि यू हैव टू डू लॉट ऑफ एडिशनल वर्क, तो उसके लिए इस सेमेस्टर में आपके पास बैंडविड्थ अवेलेबल होगा. लॉट ऑफ टाइम विल बी अवेलेबल विथ यू. Okay, only 1 minute left for you. After 1 minute, I will conclude today's lecture. It is almost 56. So, sir, in practical voltmeter, the final reading would be shown less, right? Correct. उससे कैलकुलेशन करके दिखाएंगे हम लोग. We'll take one real example. Okay, sir. और वो हम एमयू से ही लेंगे, मुंबई यूनिवर्सिटी से लेंगे. बट वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग. बच्चों इनोवेशन बहुत जरूरी है. थिंकिंग फ्रॉम ओके. अगर ये वोल्टमीटर आइडियल होगा तो इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट. तो आइडियल एमीटर विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट एंड आइडियल वोल्टमीटर विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट. डू एग्री विद दिस? Yes, sir. आइडियल एमीटर कैसे एक्ट करेगा? शॉर्ट सर्किट, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस 0 होता है. एंड आइडियल वोल्टमीटर हाउ इट विल एक्ट? ओपन सर्किट. ए भी लिख लो. दिस इज द लास्ट वर्क. हाँ बच्चा बोलो. सर जो क्वेश्चंस हो गए उसके भी आंसर्स थे टेक्सचुअल हो गए, तो उसके लिए भी टेक्स्ट बुक में से रेफर करना पड़ेगा आप? कुछ नहीं. हाँ? फर्स्ट ईयर हमारी जो 3 सब्जेक्ट्स है, मैकेनिक्स, ये इसके लिए तो कुछ नहीं. हाँ, बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं हेल्प कर दूंगा आपको, बाद में बता देंगे. अभी जो है हमारे पास इतना अच्छा स्टडी मटेरियल है विद्यालंकर के पास. नोट्स, ईक्यू, जीक्यू एंड ईक्यू सॉल्यूशन. बट सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इन चीजों के साथ. चलो बच्चों, कैन वी स्टॉप टुडे? आई विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर. Okay, any feedback you want to give for today's lecture? Have you understood today's lecture? Yes, sir. Yes, sir. चलो good. Yes, sir. Any feedback? बच्चों देखो, फर्स्ट लेक्चर से हमको फीडबैक देना अबाउट स्पीड, अबाउट एनी कंसेप्ट. आई एम गोइंग स्लो, आई एम गोइंग फास्ट, pronunciation you are not able to understand, you want me to speak in Marathi, Hindi. Officially only 3 languages I can speak. If you want I can learn some more, but अभी तो हम इतना ही बोल सकते हैं. तो कुछ भी है please let us know. Anyone, any doubt, any suggestion? Sir, next lecture will be on Wednesday, na? That we'll let you know.
Okay, thank you. चलो, थैंक यू वेरी मच.